Hello, hello everyone. So let us start the digestive system, and we are doing the Sembulingam for the dental edition. Welcome to MBBS next. So here, let me tell you what sub chapters you are seeing. First, we'll see the introduction to the digestive system. We are going very fast because there is so much to study, and in this textbook also will cover each and every point and make your physiology very strong. So let's go with it. And from this only, each line also you will get an MCQs also in our question bank. Also, you will come across many previous questions. If you study this also, this textbook will help you a lot. Let us go to that. So first is the introduction to digestive system: mouth and salivary glands, stomach, pancreas, liver and gallbladder, small intestine, large intestine, and movement of gastrointestinal tract. So maybe in future new chapters may get added or may change. So let us see to the chapter introduction to digestive system. So what is the digestive system? Digestion is defined as a process by which the food is broken down into the simpler chemical substance, and that can be absorbed and used as nutrients by our body. Most of the substances you take in your diet, right? You take rice, you take chawal, roti, and many things you take, but they cannot be utilized as of such. That's why some digestion process is there. So see, you'll broke into the small particles, right? The process is responsible for the utilization. The digestion is responsible for this function. So functional anatomy of digestion system. The functional anatomy is seen in your physiology. You know that, right? So digestion system is made up of gastrointestinal tract or alimentary canal and accessory organs. So digestion system is made up of gastrointestinal tract, alimentary canal, and accessory organs, which help with the digestion and also absorption. GI tract means gastrointestinal tract, which is a subpart. Okay, it is what tubular structure extending from GI structure is extending from the mouth to the anus. So here you can see in this figure there is the mouth here. There are the salivary gland, right? See, mouth to the anus. So mouth, after the mouth you will get the esophagus, right? Esophagus. From that you will go to the stomach. Then you will see some intestine layer. So that is first layer of intestine, duodenum. Duodenum के बाद आ रहा है आपका jejunum. ओके, फिर इलियम के बाद क्या शुरू हो रहा है? कॉलन में पहला कोसा आता है असेंडिंग कॉलन, उसके नीचे कौन है? अपेंडिक्स. फ्रॉम अबाउट टू दैट यू विल सी अ ट्रांसवर्स colon. Okay, then you will see a descending colon also. And these points what we are highlighting, if you are doing a second time, third time revision of this textbook also, you will come to know that some points are important here, right? The pelvic colon is seen in your pelvic region. Okay, in your 12th you had learned ascending, transverse and descending, but you have even one more colon that is called as pelvic colon. Next you have a rectum and anus. These associated organs are like salivary glands, right? Liver also helps in your digestion, so it is also associated gland. In liver you have a gallbladder, that is also associated gland. This diaphragm, it is not having any special function, so let us neglect that. And what is the length of the digestion system? That is the 30 feet. It opens to the external environment of the both, and GI tract is formed by the two types of physical organs. So first organ is digestion from mouth to anus. It is having primary digestion organs and accessory digestion organs. What are the primary digestive organs? These organs include mouth, pharynx, esophagus, small intestine, stomach, large intestine. Next, accessory digestion organ. These organs which help the primary digestion organs, okay, for the digestion purpose. They include teeth, tongue, salivary gland, exocrine part of pancreas, liver, and gallbladder.
Is that clear? Next, so wall of gastrointestinal tract. So let us study that wall. Okay, GI tract. How these walls are there? If you cut that one GI tract into transversely, you'll see a four layers. First one is mucus layer. Then you'll see a submucous layer. Then muscularis layer. Then you'll say serous layer or fibrous layer. So first is a mucus layer. So mucus layer, it is the innermost. मतलब lumen के बाद आने वाला लेयर. ओके, जीआई ट्रैक्ट लूमेन जहाँ फूड पास होता है उसका फर्स्ट अंदर से इनर साइड से फर्स्ट लेयर क्या है? म्यूकस लेयर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोजा or mucous membrane. It faces the cavity of GI tract. The mucous layer has a three layer structure. So in one mucous layer there are three sub layers. What are that? First is epithelial layer. So epithelial cells are there which are related to the GI tract. You have a lamina propria. You know that lamina propria is a connective tissue. You have a muscularis mucosa. This muscularis mucosa also smooth muscle fiber. So in your mucosa you have muscle, you have connective tissue, you have epithelium. So three basic tissues you are having in the mucous layer. Then second layer is what? Submucous layer. Submucous layer is present in all of the GI tract except the mouth and the pharynx. Okay, this layer is containing the loose collagen fibers. So it is having the collagen fibers. So see, submucous layer is present in the esophagus, stomach, small intestine, large intestine. Okay, but it is not present in the mouth and pharynx. Please remember, in your primary organ, mouth and pharynx, from which you get one more important MCQ. Okay, elastic fibers, reticular fibers, and few cells of a connective tissue. Fibers, collagen, elastic fibers, reticular fibers, loose collagen, all these fibers are there. Okay, in this layer. So it is having blood vessels also. It is having the lymphatic system, and also the nerves also it is having in this layer. Next, let us go to the third layer, that is muscularis layer. Name itself is muscularis, means it is having muscles. This layer in the lip and cheek and wall have a skeletal muscle. So where it is having the skeletal muscle means where it is having in your lips. So lips have a skeletal muscle, cheeks they have a skeletal muscle. See, your lips are under your control, right? Cheeks are in your control. Wall of pharynx wall also is under your control. The esophagus has both skeletal and smooth muscle fibers. So this is also one important point for your MCQ. Next, wall of a stomach and intestine is formed by smooth muscle fibers. See, they are visceral, they are involuntary. So smooth muscle, see, your stomach should not be under your control. If it is a skeletal muscle, so it means unless you want a food to get digested, it will not get digested. So there is no need. If you tell your stomach not to get digested your food, so you will not eat a food only. But you are having some what type of muscle? Smooth muscle fibers. So they are not under your control. So smooth muscle fibers in your stomach, they are arranged as a three layer section again. What are they? Smooth muscle layer, they are arranged as three layers. First is inner oblique. So oblique means their arrangement is oblique. Inner side is oblique, middle is circular, outer is longitudinal. So oblique, circular, longitudinal, oblique, circular. But when you see the smooth muscle fibers of your intestine, from here also we get a true false model incorrect statement questions. Okay, so inner circular layer is present. So which layer is absent? Oblique layer is absent here. See, in smooth muscles of intestine, they are having the two layers. Here we are telling intestine men. We are not telling it as a small intestine or large intestine. So both the intestines may have this. Okay, next let us go to the next point. The smooth muscle fibers present in the inner circular layer of an anal canal. They have an internal anal sphincter also. Smooth muscles are also present in the anal sphincter. So anal sphincter, see, inner circular layer, smooth muscle fibers are present in the anal canal. Okay, the external anal sphincter is under skeletal muscle. It is correct, right? See, intestine you are studying, I agree with you. But see,
जो इंटरनल, सपोज आपने फिशेस को देखा होगा, सपोज फिशेस आने चाहते हैं, द फिशेस इफ योर undigested food want to come out, so it may come and it may give you signal, but your outer anal system is under your control, man. Okay. Next we have a serous or a fibrous layer. So it is the outermost layer of your wall of the GI tract. It is either the serous or a fibrous in nature. The serous layer is formed by the mesoepithelial cells. It is also called as serosa or serous membrane. So it is formed by the connective tissue. Okay, serous layer is made up of connective tissue. It is having the fibers, okay, and mesoepithelial cells. That is very important. It covers your stomach, small intestine, large intestine. The fibrous layer is otherwise called as fibrosa also. Okay, because it is formed by connective tissue also. See, we are learning serous. Serous layer is present in your stomach, small intestine, large intestine. When it comes with your pharynx and esophagus, you will see the fibrous layer. So that's why, but it is outermost. There are 4 only. Next, let's see to the nerve supply to the gastrointestinal tract. GI tract has the 2 types of nerve supply. Okay. Okay, so let us see what nervous supply it is having: intrinsic and extrinsic. Intrinsic nerve supply is also known as enteric nerve supply, मतलब inner side nerve supply. Enteric nervous system is present within the GI tract. It is present inside, from the esophagus to the anus. So from your esophagus to your anus is your enteric nervous supply is there. These nerve fiber of the system are interconnected by the 2 major networks. What networks? The Auricular plexus and Meniscus plexus. The nerve plexus contains the nerve cell bodies. They have a nerve cell and a receptor. The receptor in the GI tract, they have some stretch receptors also. They have a chemoreceptors also. The enteric nervous system is also controlled by the extrinsic nerves. Okay, so enteric nervous system, it is having the nerve bodies. It is having the stretch receptors. What you are having? You are having 2 things. देखो, enteric और इंट्रिंसिक में, एंटेरिक वो ईजोफेगस से एनस के बीच में रहते हैं. इसमें 2 प्लेक्सस देखते हैं, एक ऑरिबिचस प्लेक्सस, दूसरा मेनिस्कस प्लेक्सस. ओके, और इसमें कीमोरेसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, एक्सटेंसिव नर्व्स होते हैं. लेट अस सी द ऑरिबैक्स प्लेक्सस. I think in your colleges they don't teach this. It is also called as a myenteric nerve plexus. Okay, it is also present in the inner circular muscle layer and the outer longitudinal muscle layer. Let us see what is the function of the. So see what is telling. It is also known as myenteric nerve plexus. Orbitus plexus के बदले में myenteric nerve plexus भी बोला जाता है. It is also present between the inner circular muscle layer and outer longitudinal. So inner is circular, correct. Outer longitudinal. So ऊपर हमने कुछ points पढ़े थे, right? So what inner circular and outer longitudinal? Right here, what he is telling the same thing, right? So orbitus is having the 2 types of this. The function, what is the major function of this? It to regulate the movement of the GI tract. So your gastrointestinal tract का movement ये control कर रहा है. Some nerves of this plexus they accelerate the movement by secreting excitatory neurotransmitters also. It is releasing some excitatory neurotransmitter. You can see here there is a orbitus plexus. This is your serosa, the longitudinal muscle. You can see this longitudinal circular muscle. फर्स्ट लेयर इज सी म्यूकोजा. फर्स्ट लेयर अंदर वाला ल्यूमेन है, येलो कलर ल्यूमेन है. उसके बाद आने वाला फर्स्ट लेयर ही म्यूकोजा. उसके बाद आ रहा है सब म्यूकोजा. उसके बाद आ रहा है मस्कुलरिस. अब ये किसका है? इंटेस्टाइन का है, राइट? तो करेक्ट है, लेबलिंग करेक्ट है. ओके, ये क्या है आपका? मिसनस प्लेक्सस. ये आपके मिसनस प्लेक्सस है. तो नाउ ऑरिबिटस प्लेक्सस. सो यू कैन सी हियर सीरोजा के टुवर्ड्स लॉन्गिट्यूडनल के पास रहने वाले आपके ऑरिबिटस प्लेक्सस है. ये क्या करेंगे? मूवमेंट ऑफ ये
and it releases some what it is releasing acetylcholine, serotonin, and some of the phosphate. Other of these plexus they have a motility, the inhibitory neurotransmitter, they have a vasoactive intestinal polypeptide also it is releasing. So it is देखो एक्टिवेटरी एक्टिव एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से है एसिटाइलकोलिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है. अदर फाइबर्स ऑफ दिस इट इज आल्सो रिलीजिंग, but it is also releasing some inhibitory neurotransmitters beta. Inhibitory neurotransmitters what it is releasing vasoactive intestinal polypeptide, neurotensin and enkephalin. Next is the Michener's nerve plexus. Even this lecture is also useful for your medical students also. Michener's nerve plexus. Michener nerve plexus, these are also known as submucous nerve plexus. Yes, it is situated between the muscularis and submucous layer of GI tract. What is the functions of the Michener's plexus? See, that was regulating the movement. तो contraction peristalsis के लिए वो Oribeches plexus were helping you because it is also releasing some excited neurotransmitter, inhibitory neurotransmitter VIP को release करना उसका काम है. पर functions of the Michener's क्या है? It is regulates the secretory function of the GI tract. So secretion इसका main function है और उसके अलावा क्या नहीं है. और ये Michener's plexus जो कि nerve supply है but it is not releasing any sort of neurotransmitter or inhibitory neurotransmitter or active neurotransmitter. It is not releasing. It is only and these further they help in the constriction of blood vessels. So blood vessels will be your arteries and vein they will contract. So two things, secretion of secretions मतलब आपके liver bile देना, पैनक्रियास इंसुलिन देना और गैल ब्लैडर को फिर पैनक्रियाटिक जूसेस के लिए इन सभी सेक्रेशंस के लिए यूजफुल है और कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए भी हेल्पफुल है. जो ब्लड वेसल्स है जो कि डाइजेशन सिस्टम के कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए काम आता है. मिशनर्स प्लेक्सस राइट आपने इमेज में देख लिया होगा. लेट अस सी द एक्सट्रिंसिक नर्व प्लेक्सस. एक्सट्रिंसिक मींस दैट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड, बाहर रहने वाले नर्व सप्लाई है. अब देखो आपने देखा होगा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लेबलिंग आपको पढ़ाया था उसमें सीरोजा इन्हीं में ही ऑरिबेचिस प्लेक्सस भी थे, मिशनर्स प्लेक्सस भी थे. पर ये एक्सट्रिंसिक में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बाहर रहते हैं मतलब आपके नर्वस सिस्टम में इंक्लूडेड है. सो एक्सट्रिंसिक दे कंट्रोल द एंटरिक नर्वस सिस्टम. सो दे आर कंट्रोलिंग योर इंट्रिंसिक आल्सो. तो मिशनर के लिए ऑरिबेचिस के लिए कौन मदद कर रहा है? एक्सट्रिंसिक नर्व प्लेक्सस कर रहे हैं. एंड फ्रॉम ऑल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक मतलब सडन जैसे आपके डाइजेशन है, फूड आपके मूवमेंट अंदर जा रहा है, आप नहीं बोल रहे कि इजोफेगस को फूड अंदर लो और स्टमक को भेजो क्योंकि आप यू नॉट टेलिंग एनी मैसेज. And both sympathetic and parasympathetic division of autonomic are innervated here. So let us see this figure once. You will see here students there are two enterica extrinsic. There are two extrinsic nervous systems, okay, which are helping in your digestion. The first one you can see here that you are having. Let us study the sympathetic first, okay. Sympathetic जल्दी हो जाएगा इसलिए. तो आप देखो यहाँ sympathetic में T5 से आपको आएगा सीलियक गैंग्लियन. ठीक है, सीलियक गैंग्लियन आपके किसे काम आएगा? सीलियक गैंग्लियन इज हेल्पिंग फॉर योर इजोफेगस अपर वन नीचे तक स्टमक को काम आता है, डिओडेनम को काम आएगा. ओके, एंड इट इज ऑल्सो गिविंग द फंक्शन टूवर्ड्स इलियम डिओडेनम तक ये हेल्प कर रहा है. एंड नेक्स्ट इज सुपीरियर mesenteric ganglion. Superior mesenteric ganglion is giving its nerve supply towards colon. colon मतलब लार्ज इंटेस्टाइन को ये दे रहा है. स्मॉल इंटेस्टाइन तक सीलियक गैंग्लियन है. ठीक है, किसमें? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ इंफीरियर mesenteric में कौन मदद कर रहा है? देखो ये आपका कौन सा फर्स्ट वाला, तो ये असेंडिंग है, नीचे डिसेंडिंग आ रहा. तो ये दोनों को ऊपर वाला सुपीरियर mesenteric ganglion and inferior mesenteric ganglion is giving towards the transverse colon, descending colon, pelvic colon, fossa, rectum, anus, all that.
Okay, why I told this extra means you will come to know, right? So let us study the sympathetic nerve fiber, then we will go to parasympathetic. The preganglionic sympathetic fiber of the GI tract, they arise from the lateral horns of the spinal cord between the first thoracic to the second lumbar segment. You can see in this figure, students. See, you are having the thoracic fry and to the second sac. This is ending. See, this is lumbar one. सो देखो thoracic 5 वर्टिब्रे यहाँ देखो लंबार में फर्स्ट वन ये नीचे वाला सो सेकंड वन यहाँ तक जो आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांचेस ये फॉर्म करेंगे गैंग्लियन ये फॉर्म करेंगे गैंग्लियन ये गैंग्लियन किसे किसे हेल्प करेगा कि इमेज में आपको बताया गया था राइट ओके from which the fibers leave the spinal cord and they passes through the ganglia of the sympathetic chain without having any synapse. Then they terminate into the celiac, then mesenteric ganglia. The post-ganglionic fibers also they are distributed. So there is a mesenteric. So mesenteric ganglion is of two types. Okay, superior and inferior. Mesenteric ganglion are actually they considered as a single unit. You know why the Sembulingam had told like that? Because you can see here one pink lines. They are collaborating with each other. They are togetherly. One branch they are passing towards your colon only directly. Ascending colon and transverse colon both they are getting common, right? So what is the function? The function of this is a movement, they inhibit the movements and they decrease the secretion of the GI tract by the neurotransmitter noradrenaline also. It also causes a sphincter constriction. So what it is doing? It is decreasing the secretion of GI tract. It is neurotransmitters and all that. Let us go to parasympathetic nerve supply. The parasympathetic nerve supply with GI tract they passes through that of a cranial nerves. तो cranial nerves से इसका मैकेनिज्म चलता है. पैरासिम्पैथेटिक cranial से सिंपैथेटिक आपके स्पाइनल कॉर्ड के नर्व से. क्लियरली ओके शो दिस नर्व्स. चलो हम लोग ये इमेज देखेंगे राइट. सो आप देखो ये अपना वैगस नर्व है, ये cranial नर्व है राइट. वैगस नर्व इज योर cranial नर्व. इट इज विच नंबर? 10th नंबर. ओके एक ही cranial नर्व राइट. सो आपको यहाँ थोड़ा हाँ आपने देखा होगा मैंने हाईलाइट किया था. So it is a vagus nerve. So you can see this one vagus nerve is controlling how many. Let us see. Parasympathetic is shown in this blue color. तो पहला देखो ये esophagus को help करेगा, stomach को help करेगा. Then it is also helping in your small intestines and large intestines, all that colon till where it is helping. This vagus nerve means till small intestine again. So ये vagus nerve till your small intestine it is helping. Okay, and after that you can see there is one more parasympathetic layer. It is also having spinal cord nerves. So sacrum 2 से कुछ 3 nerve fibers बाहर आएंगे, ये कोलैबोरेट होंगे और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए मैकेनिज्म को हेल्प करेंगे. So for the purpose of large intestine and the below part, in parasympathetic nervous supply you are having a different thing. I think in your colleges they don't cover this very clearly. The preganglion and the postganglionic parasympathetic nerve fiber. So mouth to the salivary gland pass to the facial and hypoglossal pharyngeal nerves. So in your mouth also you can see the pharyngeal hypoglossal nerve. So glossal and then we have a preganglionic parasympathetic nerve. They are coming from your esophagus to the stomach and the upper part of this through the vagus nerve. The preganglionic nerve fiber, to that you are having a large intestine. They are coming across from the second, third and fourth of the sacral layer. Right beta of the spinal cord. करेक्ट है. ये S2 है, S3 है, S4 है. करेक्ट है. यहाँ से आने वाले लार्ज इंटेस्टाइन को कंट्रोल करेगा. मैंने इससे पहले बता दिया था. यहाँ भी वही है ना. celiac ganglion is helping for you sympathetic. Majority till your intestine also it is helping you and it is a part of your sympathetic. And spinal cord सिर्फ एक ही included है. parasympathetic में दोनों included है. Right? एक cranial nerve भी spinal भी included है. Is that clear? Yes.
and the pelvic nerve. So all the preganglionic and parasympathetic nerve fibers, the synapse with the postganglionic nerve cells, they are the myenteric and the submucous plexus. Okay, what is the functions of a parasympathetic nerve fiber? The parasympathetic nerve fiber, they accelerates what it is doing. अब उससे पहले और फंक्शन क्या था, ये क्या कर रहा था फंक्शन, सेक्रीशन को हेल्प कर रहा था, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं ऑरिबेचस के, ऑरिबेचस और मिसनर्स क्या करें, सेक्रीशन को हेल्प करेगा ना, मिसनर को सेक्रीशन देने के लिए सिंथेटिक हेल्प कर रहा। अब इधर क्या है, एक्सेलरेट द मूवमेंट एंड इंक्रीज द सेक्रीशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो मूवमेंट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट ऑरिबेचस प्लेक्सस को कौन मदद कर रहा, पैरासिम्पैथेटिक मदद कर रहा है, और उसके साथ इंक्रीज इन सेक्रीशन। सो इट इज आल्सो हेल्पिंग फॉर मिसनर्स। ओके, मिसनर्स आल्सो इट इज हेल्पिंग द न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रीशन बाय द पैरासिम्पैथेटिक fibers is acetylcholine. And you had already learned before that Oribetes plexus is also releasing some excitatory neurotransmitter. What are the acetylcholine? अब ये स्टमक के मतलब अपने डाइजेशन जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में रहता है ऑरिबेटस प्लेक्सस। ये एसिटाइलकोलिन कैसा देगा, ये एसिटाइलकोलिन इस तरीके से दे रहा है कि इसके साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स आर गिविंग इट्स एसिटाइलकोलिन। क्लियर? Hoping that this chapter is very clear to you. Let us go to the mouth and the salivary glands. So if you want to take a break, you take a pause in this video and continue. Right, let's go to the functional anatomy of mouth. So mouth is otherwise is also known as oral cavity or buccal cavity. So in this chapter you are learning all this functional anatomy of mouth, functions, salivary glands. Saliva is very important, long answer also, and for your MCQ point of view also you get, even in your dental exams like MBBS and all that also you will get a lot. You know that in DADH also we have a salivary glands. Okay, let's continue beta. So functional anatomy of mouth. Mouth is otherwise is known as oral cavity or a buccal cavity. It is also formed by the cheeks, lips and also palate. It encloses what? Teeth, tongue and salivary gland. होता ही है ना, अपने मुंह को क्या बोलते हैं, वो आप मुंह को क्या बोल रहे हैं, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। इसमें क्या है, किससे फॉर्म हुआ है, चीक मतलब कल्लों से, फोर्ट मतलब लिप, पैलेट ऊपर के झबड़े से, इट एनक्लोजेस बाय टीथ। तो ये क्या कर रहा है, ओरल कैविटी दांत को क्लोज कर रहा है, टंग को क्लोज कर रहा है, सैलिवरी ग्लैंड्स को भी क्लोज कर रहा है। इट ओपन्स एंटीरियरली टू द एक्सटीरियर टू द लिप्स, right? It opens anteriorly above lips and exterior lips and posterior through fauces or pharynx. You know the digestion juices in mouth is what? Saliva. So that saliva थूक जो है वो आ रहा कहाँ से, salivary gland, जो भी digestive juice है। Remember, saliva is a digestive juice. So let us see the functions of mouth. After that we'll go to salivary gland. So functions of mouth. What is the primary function of a mouth? It has a few important functions also. What is that? First is the ingestion of food materials. Second, chewing the food material and mixing it with saliva. Then appreciate the taste. So let me remove. Right? Because when you are reading these notes also, you should come to know it should be concise. Okay, so first is ingestion. Ingestion मतलब intake of food. So for taking the food also it is helping you, not taking the food by nose, because you can't take the food with the nose, right? But yeah, if you are get under any big surgeries and all that, we use the food by nose, or we keep a direct hole under your stomach, and that process it comes under your oral surgery and your general surgery also. Next thing is helping for chewing purpose. It also helping for the mixing of a food with saliva, for the taste purpose, transfer of a food, that is bolus. Bolus, the transferring. So transfer of food means from esophagus to by swallowing. So right, okay. Let us see. It is also helping in your speech, right? It has a social function, like it also helps in your smiling,
and to show your expressions. Six functions. Mouth, okay. Let us go to salivary gland. Salivary gland is secreted by the three pairs. What are the major? Okay. First one, the largest salivary gland, and you have some minor salivary gland. So major and some minor salivary gland in your mouth and pharyngeal, oral mucous membrane and pharyngeal mucous membrane. Oral mucous membrane is also important for your dentist. The major glands are parotid glands, submaxillary, submandibular glands, sublingual glands also students. So let us go to parotid gland. Parotid glands are the largest of all the salivary glands. They are situated on side of the face, just below in the front of a ear. Yes, the secretion of these glands are emptied in the oral cavity by the Stenson's duct that opens inside the cheek against the molar tooth. तो पहले हम लोग क्या करें, पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड. ये कहाँ है, साइड्स ऑफ द फेस में रहता है, मतलब फ्रंट ऑफ ईयर. फ्रंट ऑफ ईयर इज अ करेक्ट लोकेशन. ओके, व्हेन यू डू अ डाइसेक्शन इन योर एनाटॉमी also you come to know, in anatomy also you need to learn a depth of this. So it is having the duct through which it is supplying its secretions. Okay, parotid gland forms saliva, and that saliva it is getting back, it is releasing out with the help of a Stenson's duct, opens into the inside the cheek. It is opening, and it is opening towards where, your second molar tooth. You know your molar teeth in your second molar teeth. You see in this image, the blue color is your parotid gland, and one pipe is coming, one pipeline structure is coming, that is your Stenson's duct. So it is releasing its secretions toward, see, imagine this is your third molar, this is your second molar. So that supply Stenson's duct will go towards your second molar. Is that clear? Let us go to the submaxillary gland. Submaxillary gland or submandibular gland, they are located in the submaxillary triangle, which is medial to the mandible. The saliva of these glands is emptied with that of the Wharton's duct. The duct opens in the either side of the frenulum of the tongue by the means of a small opening on the summit of a papilla that is called as canula sublingualis. So what he told, submaxillary gland. You know that some people also call it as submandibular gland. I prefer it as to say as submandibular gland only, but some people is also called as submaxillary gland. Let us consider it as two. You see here one point, submaxillary or submandibular gland, right? तो ये कहीं सबमैक्सिलरी ट्रायंगल में है, बट मीडियल टू मैंडिबल. अब जब लोग आपको मैंडिबल के नीचे जब आप डाइसेक्शन करोगे, आपको मैंडिबल के टुवर्ड्स मिलेगा इसका सप्लाई, सबमैंडिबुलर ग्लैंड. Okay, saliva from this gland emptied in your oral cavity by the Wharton's duct, right? तो आपका पैरोटिड स्टेंसन दे रहा, तो सबमैंडिबुलर किसे दे रहा, Wharton's को दे रहा. Wharton's, आप देखो यहाँ सबमैंडिबुलर ऑरेंज कलर में है, it is coming out, right? Okay, this duct opens the side of the frenulum of tongue. Correct है, ये टंग इमेजिन करो, टंग के नीचे frenulum है, right? वहीं उसके साइड से आ रहा है by the means of a small opening. So in your frenulum there is a small opening, there is small papillae like structure. Okay, in your frenulum some papillae like structures will be there. These structures called canulary sublingualis. Okay, एक होल्स की तरह है, वहाँ से आपका सलेवा बाहर आता है. सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड वाटर डक्ट से अपना सलेवा फॉर्म करेगा, और वो पाइपलाइन कहाँ एंड होगा, फ्रेन्यूलम ऑफ टंग में एंड होगा, कैनुलरी सबलिंगुअलिस में ओपन कर देगा. तो ये क्लियर हो गया. आई थिंक इन योर क्लास दे डोंट टेल दिस पॉइंट. ओके, सब लिंगुअल ग्लैंड, बट एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है. सब लिंगुअल ग्लैंड्स दे आर स्मॉलेस्ट salivary gland. Okay, they are situated in the mucosa at the floor of a mouth, right? So saliva from these glands, they are present in the 5 to the 15 small ducts. So these ducts are known as duct of Fravinus. Okay, so sublingualis, sublingual gland जो कि सबसे छोटा salivary gland है, ये आपके फ्लोर ऑफ माउथ मतलब टंग के नीचे फ्रीन्यूलम के पास भी ये रहेगा.
these having power into 5 to 10 small ducts. छोटा पाइपलाइन है, छोटे छोटे ट्यूब्यूल स्मॉल डक्ट्स रहते हैं, वो क्या है, डक्ट्स ऑफ रामाइनस. Okay, raminus. These ducts they open into small papillae beneath the duct. Okay, so already you know carnivora करके specially papillae था submandibular के लिए, इधर कुछ नहीं दिया. Okay, they open the duct. So remember, it is duct of raminus is a part of a Bartholin's duct. ठीक है. सो जब आप OMM ऑर्गन पढ़ोगे उसमें दिया ऐसा गया है कि सबलिंगुअल ग्लैंड बार्थोलिन duct it is having. Okay, is not telling about the raminus duct of raminus, but it is a pipeline 5 to 15 small ducts. So 5 to 15 small ducts raminus are forming Bartholin's duct. It drains into anterior part of this gland and opens into cardiac sublingualis near to the opening. So the same thing overview it is given in this figure, in this table. So when some MCQs will solve, no, we'll give this table only as to remember to the students. So sublingual you see, but Bartholin's is not shown in this labeling. Let us learn about the minor salivary gland. The lingual mucus gland. First is a lingual mucus gland. Next you have a lingual serous gland. Then you have buccal glands. Then you have a labial glands and palatal glands. Right, first you see lingual mucus gland. तो लिंगुआ मतलब टंग में छोटे छोटे माइनर छोटे छोटे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं. दे आर कवरिंग इन द पोस्टीरियर टंग. ओके, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग. So not in anterior, posterior 1/3 of tongue. Behind what? Circumvallate papillae at the top of margins. So बेटा जब आप ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन जब पढ़ोगे, आपको टेस्ट बड्स का जब आप डायग्राम डालोगे सर्कमवैलेट पैपिल में हमने देखा होगा कि कैराटिनाइजेशन होगा, पर उसके लैटरल साइड्स में आपके पास स्मॉल मतलब उसमें आपको सलाइवरी ग्लैंड्स मिलेंगे. ठीक है. अब पैपिले कहाँ अपने टंग में है, राइट. सर्कमवैलेट पैपिला इज अ पैपिला, इट इज प्रेजेंट इन वेयर, इन योर टंग. टेस्ट पैपिलेस, ओके, टेस्ट बड्स, राइट. सो वहीं 1/3 में सर्कमवैलेट के टुवर्ड्स ये लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स भी रहते हैं जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं. लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स दे आर रिलेटेड टू द सर्कमवैलेट पैपिले एंड आल्सो filiform papillae. See, filiform papillae is also having some in its lamina propria is also having the salivary gland. Then you have a buccal gland. Buccal gland they are present between the mucous membranes and also the buccinator muscle. Okay, the 4 to 5 of this one they are larger and they are situated outside the buccinator around the terminal part of the parotid duct. These glands are also known as a molar gland. तो आप लोग बक्कल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, पैरोटिड डक्ट, या तो इसे क्या बोलते हैं, मोलार ग्लैंड. ओके, बक्सिनेटर के टुवर्ड्स रहते हैं तो बक्सिनेटर और मोलार ग्लैंड करके भी बोल सकते हो, राइट. सो लेबियल ग्लैंड, सी द सिचुएटेड बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन और द ओरिफिस ऑफ द माउथ. यस. नेक्स्ट वी आर हैविंग द पैलेटल ग्लैंड. They are found beneath the mucous membrane and the soft palate. Right? From each line you get one MCQ of this Sembulingam. Okay. If you practice in such a way, no, you will get not do any mistake in your physiology questions. So next is the serous gland. What are serous gland? The type of the gland is predominant made up of serous cells. Correct? Serous cells से बने हुए हैं. They secrete a thin and watery सलाइवा. तो पानी वाला सलाइवा कौन सेक्रेट कर रहा है, सीरस. द पैरोटिड ग्लैंड का सेक्रेशन पूरा वाटरी है तो सलाइवा इट इज सीरस. एंड लिंगुअल सीरस ग्लैंड. So you see here there are two, no, lingual serous and lingual mucus. Lingual mucus is present in the circumvallate और filiform में कौन सा lingual serous gland है जो कि minor है. अब चलो mucus gland को से mucus gland this type of gland are mainly made up of mucus cells, right. So correct है, but mucus क्या है, thick and viscous saliva दे रहा है, thick and saliva. और mucus वाला saliva को से they are present in the lingual mucus gland. buccal gland का भी saliva वैसे ही है. palatal gland also. Even you remember students the submaxillary, submandibular also, submaxillary and also submandibular also. So we are adding here note.
So your Sembulingam में submandibular also come under the example of your this one as per some textbooks, okay, but in some textbooks they don't give this, right? So let us see the mixed gland. Let us see the mixed gland. The mixed glands are being made up of both serous and the mucous gland. So submandibular and sublingual and labial glands are mixed gland. Labial करके जो है labial is a mixed gland. तो minor के 5 salivary gland है, 5 salivary gland आपको दे दिए गए हो गया. So structure and duct system of the salivary gland. The salivary glands are being made up of acini and alveolus. Acini होगा इसमें, alveoli हो गए. Each acinus is formed by a small group of cells. They are forming globular cavity, central globular cavity. This central globular cavity of each acinus is continuous with that of a lumen of the duct. Okay, so is that clear? ये बात समझ में आ रही है बेटा? The fine duct they are draining from the acini. Okay, doctor. So let us see to the intercalated duct. So these fine ducts are draining into the acini of the intercalated ducts. So many intercalated ducts join together to form a intralobulated duct. Okay, and few intralobulated duct they join to open into interlobulated duct. Intra जाके interlobulated ducts, and they all together they join and they form a bunch like they form a racemose type of inflorescence. A bunch of grapes. How you see so many like that only the structure may be present if you see the real. See this image. This is your main duct. Main duct is forming some branches. So first it is forming interlobular duct. So lobules are formed. So interlobular duct. Okay. This interlobular duct again it is sub branching. It is forming a sub branch. It is forming intralobular. And this is your acini. Okay, acini के नियर बाय रहने वाला duct को intercalated duct. So intercalated duct दो है lobular ducts, interlobular duct, intralobular duct. Interlobular duct पहले आता है, फिर intra फिर आता है. Intercalated duct is near to your acinus. Okay, now you see if you cut this acini and you see that labeling, so you will see that you will having serous cells here, basement membrane is there. So this is your serous wala serous type of, and you see the nucleus is flat. So in serous cells the nucleus is flat. When you see the mucous cells, you can see it is not towards your base. Okay, the basement membrane is there and these mucous cells, these are okay, this blue color, and you see the nucleus dark blue color is centrally. Okay, that is the main difference. Okay, when you draw also you should take care of that. The properties and composition of saliva. So what is the property? Every day 1000 to 1500 ml, that is 1 liter of saliva is secreted per day. तो एक दिन में इतना सलाइवा एक इंसान को सेक्रेट हो रहा है. It is almost 1 ml per minute also. So in 1 minute how much you are getting? 1 ml you are getting. Contribution by each of this. So parotid gland 25%, submandibular, submaxillary 70%, sublingual gland is 5%. See students, this percentage given no in as if you go AKG and if you know again some it varies also sometimes. So be careful, and MCQs also author also will be very careful here. The reaction, that is it is having the mixture of saliva from the gland and the sea, it is slightly acidic. So your saliva, it is slightly acidic. See, if it is not acidic, how it can like kill the pathogens, right? It's what is its pH? 6.35 to the 6.85, almost 6. You will imagine it as 6. Okay, what is its specific gravity? It is 1.002 to this 1.012. May MCQ come from this, but it is not important. Okay, saliva is a hypotonic to plasma. So plasma के साथ hypotonic है, right? Composition of saliva. So mixed saliva contains how much water? 99.5% water and 0.5% of solid. So let us learn the composition of saliva by one mind map. See students,
This is your saliva. Okay, saliva is having water 99.5% and water solid is 0.5%. So water के बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, राइट, एंजाइम्स। देखो कौन से एंजाइम्स है अपने सलाइवा में, वाटरी सेक्रेशन में क्या वाटर हो गया, पर सॉलिड्स में सॉलिड्स 0.5% इज डिवाइडेड टू 3 ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, गैसेस। ठीक है, ऑर्गेनिक में देखो एंजाइम्स, पहले देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एंजाइम्स अलग रहते हैं, मतलब बायोकेमिस्ट्री वाले कौन से सेपरेट हो रहा है, अमाइलेज सेपरेट हो रहा है, कैटालिन जो मेन डाइजेस्टिव एंजाइम है, देन माल्टेज के माल्टोस के लिए, लिंगुअल लाइपेज, सो लिंगुआ टंग के पास एक लाइपेज भी आएगा, लाइसोसोम आएगा, फॉस्फेटेट आएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि कैलिकरीन आल्सो विल कम। Okay, so other organic substances, so it is albumin, mucin, proline, rich, so albumin also it is releasing, mucin also it is releasing one antibody that is IgA, lactoferrin करके lactoferrin भी release करेगा, blood group antigens also, so blood suppose आप unknowingly किसी other ग्रुप वाले का ब्लड आप सक भी कर लिया अनफॉर्चुनेटली, ओके, सो बट इट इज डूइंग टू फाइट, ओके, दिस वन, तो सलाइवा ये भी फंक्शन करेगा, फ्री अमाइनो प्रो एसिड्स सेलेक्ट करेगा, एंड also it is also doing the non-protein enzymes, urea, uric acid, xanthate, hypoxanthate and all that. Let us see the inorganic substances. What inorganic? Sodium, calcium, potassium, bicarbonate, bromide, chloride, fluoride and all that also it is having. So if you drink, if you swallow the saliva also, sometimes these substances also may enter in your body, right? Next, gases also it is having some oxygen, carbon dioxide. Normally glucose is absent in your saliva, but if the patient is having the diabetic mellitus, so you can see the glucose. So what you should do, you should do a Barber test or Molly's test if you get a diabetic patient. Even the sweet smell you will get from their mouth also. So digestion of the enzymes of saliva. See, salivary amylase क्या करेगा, all salivary gland में रहेगा salivary amylase, जो कि एसिडिक मीडियम रहेगा, जो कि स्टार्च को माल्टोस में करेगा, करेक्ट, ओके। माल्टेस क्या करेगा, माल्टोस में ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, पर ये सिर्फ मेजर सलेवरी ग्लैंड में ही रहेगा। मेजर सलेवरी ग्लैंड बोले तो अपने पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल ग्लैंड इट इज हैविंग इन एसिड, इट कन्वर्ट्स द ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैट, सो लिंगुअल साइड है, लिंगुला, लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल साइड मतलब टंग के साइड के ग्लैंड है ना, इधर ऊपर लिंगुअल करके, लेबियल, लिंगुअल सिरोजा, ये दोनों में वो सेक्रेशन मिल जाएगा। चलो बेटा, चलो आपको क्या करेगा, आपको functions of saliva करेंगे, ओके। Saliva is essential for digestive juice, since it may have it absence military inconveniences also. The preparation of food for swallowing. So when the food is taken into the mouth, it moistened and dissolved by the saliva. So moistening, preparation for the food को moisten भी करना इसका काम है, ओके। तो फूड को मॉइस्टनिंग मतलब भिगाना, फूड को भिगाना काम इसका है, ओके। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ इज आल्सो मॉइस्टेड, so it is also moistening your oral mucous membrane also. It also facilitates the chewing by the movement of the tongue, so movement of the tongue and moistened and mastication of the food is rolled into the bolus. The much of this the saliva lubricates the bolus and also it facilitates the swallowing, okay. Then taste के लिए मालूम होता, right? So what it will do, chemical sensation you would see, solvent when it is dissolved, मतलब कुछ फूड है आपको डिजॉल्व हुआ तो है ना, आपको मालूम हो जाएगा उसमें क्या है, टेस्ट करके, टेस्ट बड्स रहते, टेस्ट से रिकॉग्नाइज करने के लिए ये होता है, ये डिजॉल्व होने के बाद आता है। डाइजेस्टिव फंक्शन, तो सलाइवा हैज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हमने बताया मेन पहले करेंगे, वो भी एंजाइम्स है जो कि हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है डाइजेशन के लिए, राइट। So digestive enzymes are what? Salivary amylase, maltase and lingual lipases. तो अपन क्या करेंगे, salivary lipase के बारे में, amylase के बारे में। Salivary amylase is a carbohydrate digesting enzyme
It is amylolytic enzyme. It is digestion what starch and converts. So starch को ये क्या क्या convert करेगा? Starch को dextrin और maltose में convert करेगा. The starch digestion starts in the mouth only. So if you take some starch, rice or all that, so digestion may start in your mouth only. The major it occurs in the stomach. The major part of the digestion occurs in the mouth. But food stays for the short time in the mouth because food stays in the short time of the mouth. Okay. Optimum pH. What is the pH, beta? The pH is necessary for the activation. So pH of the salivary amylase is what 6. So the salivary amylase cannot be act on cellulose. Remember the point. It cannot act on the cellulose salivary amylase. The enzyme maltase is present in the traces in the human saliva. So ये भी बहुत ही कम रहता है. maltase भी traces में होता है, कम अमाउंट में रहेगा. तो कौन ज़्यादा रहेगा? salivary amylase में कौन ज़्यादा रहेगा बेटा? इसके दूसरे एंजाइम्स जैसे माल्टेस कम में अमाइलेज ज़्यादा रहेगा इसमें. राइट. इट कन्वर्ट्स द माल्टोज टू द ग्लूकोज. सो नेक्स्ट यू हैव अ लिंगुअल लाइपेज. लिंगुअल लाइपेज जो कि क्या करेगा? इट इज अ लिपिड डाइजेस्टिंग लाइपोलाइटिक एंजाइम. इट डाइजेस्ट द मिल्क फैट्स प्री एमल्सिफाइड फैट. राइट. लाइपेज मतलब फैट को डाइजेशन. तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए क्या भी नहीं है अपने माउथ में. ओके. इट हाइड्रोलाइज द ट्राइग्लिसराइड्स इनटू द फैटी एसिड्स एंड डाइग्लिसरॉल. Cleansing and a protective function. So what it is doing due to the constant secretion, the mouth and teeth are cleansed. मतलब धोया जा रहा है. And free of the food debris also. Even what it is doing, it is shed the epithelial cells and foreign particles also. So cleaning it is doing. And it also prevents the bacterial growth by the removal of the material by the medium of culture. Next is what? The enzyme lysozyme of saliva kills the bacteria. Which bacteria it is killing? Staphylococcus. Coccus मतलब spherical bacteria. Streptococcus chain like bacteria. Brucella. Brucella मतलब Baker type. ये तीनों बैक्टीरिया को ये मार रहा है. Next you have a protein rich proteins. You have a lactoferrins. They are also present in your saliva. They act as antimicrobial property. These proteins, they also protect your teeth. So what they are doing, students? They are also protecting the teeth by the stimulating the enamel formation. So but enamel, as a dental students, you may also know that before only this one is helping in other things. The saliva also contains some secretory immunoglobulin. So what it is having IgA and antibacterial and antiviral action. The mucin is present in the saliva. It is also mucin करके एक layer भी रहता है saliva में, mucus layer देखा होगा, right? It is also it protects the mouth. The thick substance जो है mucin ये क्या करेगा? Thick protects your mouth. lubrication मतलब थोड़ा ऑयली लाइक टेक्सचर देने के लिए आपके म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन को दे रहा है. ओके. इसके बाद आपको देखेंगे रोल इन द स्पीच. रोल इन द स्पीच. राइट स्टूडेंट्स. what is the role of the speech in the so it moisten जब ये mouth भीगेगा lubricate the soft parts of mouth. ठीक है. saliva helps in the speech, you know that. So if it is becoming dry, articulation and pronunciation will become difficult. Right. dry रहेगा तो I can't speak. Right. So now I am taking some water. Next, let us go to excretory function. Many substances, both organic and inorganic, they are excreted in your saliva. Right? It is excreted substances also like mercury, potassium iodide, lead and thiocyanide. The saliva also excretes some viruses. थोड़े viruses को ये छोड़ रहा है. कौन से viruses जैसे rabies virus and mumps forming virus को भी ये excrete कर रहा है मतलब मार रहा है. एंट्री होने के बाद इस पे एक्ट कर रहा है. जैसे it excretes some dangerous substances also. What is that? mercury जो बहुत टॉक्सिक है इंसान की बॉडी में आए तो mercury बहुत डेंजरस हो जाएगा किडनीज के लिए. ओके. पोटेशियम आयोडाइड लेड को भी लेड से तो बहुत ही डेंजर केसेस आते हैं पेशेंट्स के. तो इसके लिए भी ये अच्छा इंपॉर्टेंट काम होता है सलाइवा. तो अपन कैसा भी क्या है सलाइवा विल थ्रो ऑन समवन फेस. We neglect the saliva, right?
but see how much the God had given in that. So in some pathological conditions, students, the saliva excretes a certain substances which are not found in the saliva under normal condition. What are such? So such as glucose. In abnormalities, not only you know that abnormalities में ग्लूकोज मिलेगा आपको डायबिटिक्स मेलिटस शुगर पेशेंट के सलाइवा में. In certain conditions, some of the normal constituents of saliva they are excreted in larger quantities also. For example, urea is excreted in saliva. कई बार सलाइवा में यूरिया भी रिलीज होता है. वो कौन से केस में? नेफ्राइटिस. Nephritis means what, students? The inflammation of nephrons. Okay, and excess calcium is also secreted if the patient is having hyperthyroidism. So, if you do saliva test also, you may come know the patient is having hyperthyroidism or not. You come to know the patient is having sugar or not, if he is having the nephritis or not. Right. Let us go to the regulation of the body temperature. In dogs and cattle, the excessive dripping of saliva during panting it helps in the loss of a heat and regulation of a body temperature. Right. However, the human beings, the sweat glands play a major role in temperature regulation of saliva and it does not play an important role in function. Next is the regulation of water balance. So what is that? Body water content is decreasing, students. Okay, the salivary secretion also decreases. This causes a dryness. Okay, so dryness of a mouth and induce your thirst if saliva is not good or it is not secreted correct amount. So when the water is taken in the quenches the thirst and restores the water. Okay, so sometimes if saliva, you know that it is having water, 99.5% of water. So in such a case, if saliva is not secreting well, if you drink water also, sometimes it may help you. Okay, regulation of salivary secretion. So for this regulation, you need again a nervous system. The nervous system को फिर back आ गया हम लोग. It is regulated by autonomic nervous system, right? Autonomic nervous system. चलो, salivary gland के nervous system कौन से? They are parasympathetic and sympathetic. इससे पहले हमने पढ़ा था ना पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक, तो उनके बारे में रिवाइज करेंगे. पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. The parasympathetic fibers they are preganglionic fiber to the submandibular and sublingual. Parasympathetic में जब पढ़ा था you know that preganglionic fiber, right, which is coming from your vagus nerve, 10th cranial nerve. They arise at so इससे पहले ये लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया गया था सुपीरियर salivatory nucleus and it is where it is situated near to the pons of a brain. After taking the origin from the nucleus, the preganglionic fibers run through the nervous intermediates. So they are moving even towards the nerve intermediates of vesicle, geniculate ganglion, the motor facial nerve, the chorda tympani of the facial nerve and the lingual branch of the trigeminal nerve also, students. And finally they reach to the submaxillary ganglion. We have a postganglion कहाँ से शुरू होगा? स्पाइनल कॉर्ड के S2, S3 and S4 से अपना पैरासिम्पैथेटिक फाइबर रिलीज हो रहा है, राइट? The postganglion fibers they arise from the ganglion and they supply to the submaxillary and sublingual. So you please remember parasympathetic में especially preganglionic submandibular salivary geniculate intermediate इन सभी चीज़ों को ये दे रहा है, राइट? तो इनका लेबलिंग एक बार पढ़ेंगे. देखो आपको यहाँ देखो इन दिस ब्लू कलर इमेज you are having preganglionic fiber. Okay, preganglionic fiber and postganglionic fiber. So first let us see the postganglionic fibers. postganglionic fibers preganglion क्या, तो pre मतलब वैगस से आने वाला है ना. तो ये देखो ये क्या कर रहा है, अपने ब्रांचेस फेशियल नर्व को दे रहा है. ये geniculate ganglion, so it is also having the geniculate ganglion and it is having the nervous intermediate of Reisberg. So nervous intermediate is present in the regulation of some the मीडिया करके पूछ सकते हैं यहाँ से MCQ, राइट? सो ये आपको इमेज याद रहना, नर्वस इंटरमीडिएट्स ऑफ Reisberg,
Okay, the superior salivatory nucleus. Okay, next you are having this. So पोस्ट में आप देखो दिस इज योर लिंगुअल नर्व और ये आपका सबमैंडिबल. सो ये आपके फाइबर्स यहाँ पर यहाँ कोई स्पेशल पॉइंट नहीं दिया गया है, राइट. So let us learn about the parasympathetic fiber of your parotid gland. इसके बाद हम sympathetic, parasympathetic बहुत छोटा है. The parasympathetic fibers of the preganglion of the parotid gland, they arises from the inferior salivary nucleus. So inferior salivary nucleus से आ रहा है, preganglion fibers से आ रहा है. It is situated upper part of medulla oblongata. ये कहाँ से आ रहा है बेटा? ये pons से आ रहा है. ये को सब posterior पैरासिम्पैथेटिक सबमैंडिबल यहाँ आपने पढ़ा होगा पॉइंट पॉन्स करके. ये कौन से आ रहा है? आपका मेड्यूला से आ रहा है. फ्रॉम द फाइबर्स ये आपका फ्रॉम द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व. सो इट इज नॉट पोस्ट कहाँ से आ रहा है आपको? ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व, जो कि आपके वैगस के ऊपर, वेगस नर्व के ऊपर 9th वाला क्रेनियल नर्व इज ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व. So parasympathetic from there, and you have a tympanic plexus, tympanic plexus, lesser petrosal nerves, end in the otic ganglion, right? The postganglionic fibers, they are arising from the otic ganglion and they arises from the parotid gland, they are passing through the auriculotemporal branch in the mandibular division of the trigeminal nerve. So आपका पोस्ट देखो प्री हो गया. अब पोस्ट क्या कर रहा है? ओटिक गैंग्लियन टू रीच टू द पैरोटिड ग्लैंड by the passing through the auriculotemporal branch of the trigeminal nerve. So let us go to the functions of a parasympathetic nerve. So when the parasympathetic fibers of the salivary gland, they are situated in the large quantity of water saliva that is secreted in the less amount of organic constituents. It is because of a parasympathetic fibers they are activated the acinar cells and they dilate the blood vessels of salivary gland, and they are also having the neurotransmitters. What neurotransmitters it is having? It is having the acetylcholine, right? So हमने क्या किया? फंक्शंस, इसका मेन फंक्शन क्या है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटरी सेक्रेशन विद लेस ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ये रिलीज करने के लिए पैरासिम्पैथिक रिस्पॉन्सिबल है. ओके, सपोज आपको पैरासिम्पैथिक वैगस नर्व या क्रेनियम से कुछ डैमेज हो गया तो वाटरी सेक्रेशन कम हो जाएगा, ऑर्गेनिक सेक्रेशन ज़्यादा, उनका माउथ और ऑयली हो जाएगा, म्यूकस ज़्यादा हो जाएगा. ओके, right? So let us go to see this figure. So what he's telling me, he's telling that the preganglion, जब आप preganglion को देखोगे यहाँ से आपको ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व के लिए एक ब्रांच जाएगा. ओके, टिम्पैनिक ब्रांच भी एक रहेगा जो कि आपका नर्व फाइबर का, और टिम्पैनिक प्लेक्सस मिलेंगे. ठीक है, ये इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस. तो यहाँ इंफीरियर, यहाँ सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है. कहाँ? सबमैक्सिलर सबलिंगुअल में. यहाँ ऑपोजिट है. ओके, because sublingual and mandibular are near to each other, no? So you can study them together, but you can't do it thoroughly, right? It's bit far from each other, right? थोड़ा डिस्टेंस है दो के बीच में, राइट. नेक्स्ट इज व्हाट? लेसर पेट्रोजल नर्व. ये देखो पोस्ट में कौन सा आ रहा है? पैरोटिड ग्लैंड से ओटिक गैंग्लियन आ रहा है, यहाँ से पैरोटिड आ रहा है. चलो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? सिंपैथेटिक फाइबर्स का पढ़ेंगे. सिंपैथेटिक preganglionic fibers of the salivary arises from the lateral horns on the first of the second thoracic segment of segment cord. आपने सुना होगा, इससे पहले ही हमने डिस्कस किया था कि स्पाइनल कॉर्ड के सेकंड thoracic segments of the spinal cord, right? These fibers they leave the cord through the anterior nerve to the root and end in the superior cervical ganglion or sympathetic chain. Right, the postganglionic fiber from the ganglion, they are distributed to the salivatory glands along to the nerve plexus around the arteries of this gland. ठीक है. Now what is the functions of a sympathetic gland? This stimulates sympathetic fibers with a less secretion of saliva. ठीक है, less और thick
देखो ज़्यादा पतला वाला सेक्रीशन के लिए पैरासिम्पैथिक काम है, एंड ये थिक वाला एंड रिच इन द, it is rich in the mucus, so it is very rich in the mucus. Rich mucus secretion is helping by sympathetic, okay, from which also you can expect on MCQ in your MDS, PG entrance. So it is better than the fibers, activate the acini cells, and they causes a vasoconstriction. They are secreting by noradrenaline. एसिटाइल कोलिन कौन सा नर्वस सिस्टम दे रहा है? पैरासिम्पैथेटिक, इससे पहले हमने बताया था। ओके, सिंपैथेटिक नॉर एड्रेनलिन जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का रोलिंग इनहिबिटरी फंक्शन है। तो रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ सलाइवेटरी सेक्रेशन, सो कई बार होता है रिफ्लेक्स, इनके बारे में देखेंगे। सलाइवेटरी सेक्रेशन रेगुलेटेड बाय द नर्वस मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, सडन मैकेनिज्म। So it is an unconditional reflex and conditioned reflex. So let us see what is unconditional reflex. So unconditional reflex is a inborn reflex. So बच्चा जब पैदा होता है तब का रिफ्लेक्स है, that is a present since birth. Okay, बच्चा पैदा होने के टाइम से ये birth है, it does not need any previous experience. Okay, this reflex induces salivary secretion, right? When any substance is placed in the mouth. तो जब आपके माउथ में कुछ फूड, मतलब बच्चे के मुंह में इनबॉर्न, बच्चा पैदा होते ही अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है जो कि अनकंट्रोल्ड भी है सलाइवा का सिक्रीशन के लिए। अब देखो बच्चे के मुंह में फूड रखोगे तो सलाइवा सिक्रेट होगा ऑटोमेटिक। ये ऐसा नहीं है कि कोई कंडीशन से कोई रोल है, वो बच्चा रो रहा हो, हैप्पी हो, कुछ भी उसके मुंह में मिल्क का बॉटल लगा दिए तो ये सलाइवा सिक्रेट होता है, राइट। इट इज बाय द नर्व एंडिंग्स ऑफ दिस म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ कैविटी। तो किसकी वजह से? नर्व्स जो है ना ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन के, उनके वजह से भी ये हो रहा है। सो व्हेन द फूड इज टेकन, when you take some food, when any unpleasant unpalatable substance is there, oral cavity is handled with the instrument by the dentist. जब आपने देखा होगा पेशेंट को जब डेंटिस्ट होल्ड करता है तब क्या होता है, टाइप का सिक्रीशंस वो रिलीज कर देते हैं। सलाइवा तो सिक्रेट होता है। बहुत बार आपने देखा होगा डेंटिस्ट को एक सक्शन मशीन को रखना पड़ेगा जिसमें सक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो वो फ्लूइड बहुत सारा भर ही जाएगा और आप यदि कुछ सर्जरी कर रहे हो तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। लेट अस गो टू द कंडीशनल रिफ्लेक्स। व्हाट इज योर कंडीशनल रिफ्लेक्स? कंडीशन मतलब यदि आप हैप्पी हो तो फूड ज़्यादा, यदि टेस्टी फूड इन द प्रेजेंस ऑफ योर फूड माउथ इज नॉट नेसेसरी टू नो, ओके, so you may see that, okay, in the presence of a food in the mouth, it is not so necessary for to this to reflex of this function. If you get a smell of the food also, if you hear about the food also, sometimes that impulse suddenly कुछ ज़्यादा ही सलाइवा बाहर से मुंह से निकलता है, ओके, लार निकलती है। कई बार कुछ लोग सोते भी है, कुछ डिसऑर्डर की वजह से भी आ जाता है सलाइवा। अब चलो effects of drugs and chemicals on salivary secretions. Sympathometric drugs like adrenaline and ephedrine, parasympathometric drugs like acetylcholine, pilocarpine and muscarine, physiology or histamine, right? Substances which decrease salivary secretion. They are the sympathetic depressants like ergotamine, dibenamine, right? Ergotamine and dibenamine, right? Ergotamine and this. See, sympathetic. कई बार नर्व्स को आपको क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं तो उनको सलाइवा सेक्रेशन को भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है पैरासिम्पैथिक, क्योंकि आप देखते हो नर्वस सिस्टम को इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है पर इसमें हम लोग कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, राइट। लेट अस गो फर्दर। पैरासिम्पैथिक डिप्रेसेंट्स लाइक एट्रोपिन एंड स्कोलामाइन, सो इसका डिप्रेसेंट्स, तो आपको कई बार इस तरीके से ड्रग्स ले लेते हो उसमें इफेक्ट पड़ जाएगा, तो ज़्यादा सेक्रेशन तो होएगा, डिक्रीज तो होएगा। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, ज़्यादा सलाइवा सेक्रेट करने हेल्प करेगा, लिक्विड ज़्यादा वाटर कंटेंट को हेल्प करेगा। दिस इज व्हाट sympathetic will help in the mucus secretions, right? Let us go to applied physiology. Hyposalivation, तो reduce, hypo मतलब कम है, reduced reduction in the secretion of saliva, इसे क्या बोलते हैं? हाइपोसैलिवेशन। ये टेम्पररी
टोटली क्लोज नहीं है सैल्वेशन, ओके। इट में भी 2 टाइप्स, ओके। तो इसमें 2 टाइप है, एक टेम्परेरी हाइपोसैल्वेशन। ये है टेम्परेरी हाइपोसैल्वेशन कब होगा, जब आप फियर में हो, डर में हो, तो सलेवा आना सेक्रेटरी कम हो जाएगा। फियर है तब माउथ थोड़ा ड्राई ड्राई हो जाएगा, हीट की वजह से भी सलेवा सेक्रेशन कम हो जाएगा। तो बट डिहाइड्रेशन में भी हो गया ना, तब का भी स्टोरी यही होगा। तो परमानेंट हाइपोसैल्वेशन मतलब सलाइवा सेक्रीशन का परमानेंटली स्टॉप, सीधा स्टॉप। ये देखो फिजियोलॉजिकल कंडीशन, बीमार जब होते हैं, वो डर लगता है, बुखार आता है, डिहाइड्रेशन। ये कैसा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सलेवरी डक्ट, तो सैलोथियासिस। सो इफ एनी सलेवरी डक्ट में आप क्या है असिनाई, ये जो इंटरकैलेटेड लॉब्यूल्स है, जहाँ कुछ स्टोन्स आए या कुछ क्लोज कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म हो तब का। congenital absence of a hypoplasia and CRO. Even paralysis of facial nerve also will affect your saliva secretion. तो saliva secretion कम हो जाएगा जब बेल्स पैलेसी आता है, जब आपको फेशियल नर्व डैमेज होता है, पैरालिसिस होता है ना फेस का, राइट। हाइपर सैल्वेशन, ज़्यादा एक्सेस सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, इट इज हाइपर। द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द हाइपर सैल्वेशन ऑफ दिस प्रेगनेंट आल्सो, ओके। हाइपर सैल्वेशन जनरली कब होगा, प्रेगनेंसी में होगा। पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी, जैसे कुछ बीमारियां, जैसे पेटालिज्म, सियारोरिया, सायरिज्म, सियारोसिस, ये क्या है आपको फर्दर आप गूगल इट आउट करो। हाइपर सैल्वेशन अकर्स इन द फॉलोइंग कंडीशन, और इस पे हम लोग एमसीक्यू नोट्स में ऐड करेंगे इसके बारे में, सियारोरिया, सायरिज्म एंड सियारो। तो इन MBBS नेक्स्ट के नोट्स भी काम होते हैं, right? So decay tooth or neoplasm, they are abnormal, the new growth of the tumor in the mouth or the tongue due to the continuous irritation of the nerve endings of your mouth. So next is a disease of esophagus, stomach and intestine. Next is neurological disorders such as mental retardation, cerebral stroke, Parkinson, some psychological and psychiatrist conditions also. What you are getting MCQ point, it is a nausea and vomiting, right? Other diseases, what other? So hypo and hyper के बाद, इनके बाद even you have xerostomia. It is condition where you see a dry mouth. It is called as when you see a pasties and cotton mouth also. This one in the absence of a saliva secretion only. Actylism, condition in which you see dehydration of renal failure, मतलब किडनी फेल हो जाएगा। सोर्जन सिंड्रोम होगा इसमें, या तो रेडियोथेरेपी में जाना होगा पेशेंट, कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम लोग रेडियोथेरेपी भेजते हैं ना, या तो कुछ ट्रॉमा, कुछ इंजरी हुआ होगा सैलिवरी डक्ट का, राइट। देन साइड इफेक्ट टू द ड्रग लाइक एंटी हिस्टामिन्स, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी पैरकोनियन ड्रग, and if you get a shock also, right, after a smoking, you take a marijuana, a psychoactive compound and the plant like cannabis, right. So xerostomia causes the difficulties in mastication, so difficulty you will get a swallowing of a speech, also causes a bad breath, halitosis, bad breath। तो इस पूरे कंडीशन की वजह, ठीक है, जब सलाइवा सीधा नहीं आएगा तो आपको बैड ब्रेथ तो आएगा, राइट। नेक्स्ट इज ड्रोलिंग, अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ सलाइवा आउटसाइड द माउथ, ठीक है, ड्रोलिंग की कंडीशन। ड्रोलिंग इज ऑफन एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा एसोसिएटेड विद इनएबिलिटी टू रिटेन सलाइवा इन द माउथ। तो माउथ में जब सलाइवा हम कंट्रोल नहीं कर देंगे तो माउथ से सलाइवा झड़ता रहता है, इसे क्या बोलते हैं, ड्रोलिंग। Drooling occurs in the following conditions during your teeth eruption in children, जब बच्चे के मुंह में दांत आते हैं, difficulty in swallowing, खाना ज़्यादा swallowing नहीं होता है तब सलाइवा निकल जाता है, upper respiratory tract infection और nasal allergies in children, जब किसी को तो सर्दी कुछ जुकाम भी आता है तब भी आप बेड में सो रहे होंगे तब भी सलाइवा मुंह से निकलने के चांस आपने देखा होगा अपने लाइफ में एटलीस्ट वन टाइम। Tonsillitis, जब inflammation of tonsils, peritonsillar abscesses, so in such conditions also. Chorda tympani syndrome, so in this syndrome what is that? Chorda tympani nerve, so it is a condition characterized by the sweating while eating, so the people gets chorda tympani syndrome में खाना खाते समय sweating होता है। During the trauma of surgical procedure, some of the parasitic nerve may gets severe,
मतलब क्या हो गया, पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो कि सलाइवेटरी ग्लैंड को आ रहा है उसमें कुछ डैमेज कर दिया गया है, सर्जिकल्स में डॉक्टर्स ने कुछ गलती कर दिया, उसने क्या वो फाइबर्स जो वो कॉर्डा टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व को जाता है वो डिविएट होता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, एंड क्या होता है वो सलाइवा के बदले में स्वेट आता है, मतलब जो अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है इसे सलाइवा सेक्रेशन काम कर रहा है वो उल्टा सीधा हो गया कॉर्डा टिम्पैनिक को चले जाता। अब कॉर्डा टिम्पैनिक को चले गया तो ऑटोमेटिक सलाइवा के बदले में स्वेट की तरह, मतलब गेटिंग सलाइवा इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ठीक है, सलाइवा थ्रू पसीने के जैसा मिलना, ये रेयर कंडीशन होता है कॉर्डा टिम्पैनिक सिंड्रोम, जो सर्जिकल ऑपरेशन के बाद इस गड़बड़ी में हो जाता है। द फूड इज प्लेस्ड इन द माउथ, द सलाइवा इज एसोसिएटेड विद स्वेट सेक्रेशन। नेक्स्ट इज योर माउथ। Mouth is called as acute viral infection affecting your parotid gland. The virus that causes disease is a paramyxovirus. This is commonly discovered in the children and not immunized. Okay, it occurs in the adults also. The features of this ones are the puffiness of the cheek due to the swelling of the parotid gland. If they get a fever, sore throat, and also weakness. Okay, mumps also leads to meninges, gonads, and also pancreas. Let us go to Sjogren syndrome. It is what autoimmune disorder in which immune cells destroy the exocrine part of the lacrimal gland and salivary gland. तो इसमें क्या होगा, लैक्रिमल ग्लैंड भी खराब हो जाएगा, सलाइवेटरी ग्लैंड भी खराब हो जाएंगे, एक्सोक्राइन सिस्टम ऑटोइम्यून। सो कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस सिंड्रोम इज व्हाट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ओके, लैक ऑफ सलाइवा, ड्राई आ जाएगा, तो परसिस्टेंट कॉफ एंड ड्राइनेस ऑफ आई, आंखें भी ड्राई हो जाएगी। सिवियर कंडीशन इट में ऑल्सो अफेक्ट द किडनी, लंग, लिवर, ब्लड वेसल्स आर ऑल्सो समटाइम्स दे गेट अफेक्टेड। Right students, now we are going to start with your stomach. Hoping that saliva is clear to you, mouth also is very clear to you, and we completed 2 chapters of this digestion. Let us go to the stomach now. So these topics you will learn in the stomach. And it is a main part from which you may listen. If you want a break, you can take a pause this video and continue afterwards. Right. The functional anatomy of the stomach. The glands of stomach, functions of a stomach, properties, all this. Okay, let us go to this. What is the anatomy of stomach? Let us see. It is a hollow organ between. It is situated below diaphragm. So where is your stomach? It is below diaphragm. On the left side to the abdominal cavity. In your abdominal cavity, in which direction, in which side it is present also is very important, right? MCQ can be come from here. Volume of the empty stomach is how much? 50 ml. So if your stomach is empty, 50 ml is its empty level, you see, under the normal condition, okay, it can expand or accommodate, so it can expand, and 1 to 1.5 liters of solids and liquids, it can however it is capable of expanding still the further it goes to 4 liters. So if you take something more than 4 liters, मतलब फुड बोलस जो लिक्विड से सलाइवा से मिक्स हो के बोलस की तरह फॉर्म करेगा, वो 4 लीटर्स तक थिक लेयर जाके स्टमक में जब तक सेटल नहीं होता तब तक भी स्टमक आपका काम करेगा, राइट? पार्ट्स ऑफ द स्टमक, बट व्हेन यू इट कम्स टू 1.5 ओनली यू विल गेट अ फुलनेस ऑफ द स्टमक, मतलब पेट भर गया ऐसा फील होता है। Parts of the stomach, there are the 4 parts, okay, don't follow the old textbooks, okay, we have 4 parts of the stomach. Here we have a cardiac region, fundus, body is also known as corpus and pyloric region. So आपको यहाँ parts of the stomach दिया गया है, right बेटे? So आपने देखा होगा यहाँ esophagus है, ये आपका fundus है, this is your cardiac region. So first आपका क्या है, cardiac region. So heart से नीचे आ जाए cardiac region, cardiac के नीचे body को क्या बोलते हैं, pylorus, corpus, okay, pylorus,
ओके, वेयर इज अ फंडस? देखो फंडस, सो पहला कौन आता है? कार्डियक, फिर फंडस, फिर बॉडी, फिर पाइलोरस। अब ये लेसर कर्वेचर मतलब ये लेस वाला कर्वेचर है, या इतना ज़्यादा कर्व आपको दिखता है तो लेस कर्वेचर ये है, और ये ग्रेटर कर्वेचर, और ये एंट्रम है। ये रीजन क्या बोलते हैं? एंट्रम। दिस रीजन इज नोन एज एंट्रम, एंड दिस बिलो पार्ट इज अ पार्ट ऑफ अ इंटेस्टाइन, दैट इज duodenum, so it is not a part of your stomach. So but it's a continuation from that. Okay, so first let us go to cardiac region. Cardiac region is uppermost part of the stomach. Okay, it is continuing from where you get esophagus. Okay, from where you get your esophagus. अरे ओके, esophagus के towards से open होता है, and it is guarded by the cardiac sphincter. So cardiac region has one sphincter. So food is entering inside or not, it is regulated by one sphincter. That is sphincter is known as cardiac sphincter, which open towards the stomach. This portion is also known as cardiac end also. Fundus. Now fundus is a small dome-shaped structure. It is elevated above the level of the esophagus opening. So देखो, it is elevated above the esophagus opening. So that layer is fundus. Is that clear? Next is body or corpus. Okay. So here you see it is the largest part of the stomach. Largest part of the stomach is body. Okay. The forming about 75 to the 80% whole stomach. It extends just below the fundus. Okay. Fundus is just below the fundus up to the pylorus तक body है. Next is what? Pyloric region. Pyloric region has two parts again. It is having one antrum and pyloric canal. Okay, एक pipeline structure होगा यहाँ pylorus के बाद pylorus pipeline. So this is a pylorus tube. So and this is antrum. तो stomach का ending part antrum है जो कि pyloric region में ही आता है. The body of the stomach ends in the antrum. The junction between the body and antrum is marked as a angular notch. That angular notch is called a incisura angularis. Antrum is contributed by a narrow canal which is also called as pyloric canal or a pyloric gate. Pyloric canal opens into the first part of the small intestine. The first part is called as duodenum. The opening of this pyloric canal is guarded by the sphincter. The sphincter is called as pyloric sphincter. So it is also guarded by the pyloric sphincter. It opens into the duodenum. Stomach has a two curvatures to it. Okay, I already told it in the labeling. Right side is lesser curvature and left side is greater curvature. Right. The structure of the stomach wall. So what is it? Again, you know, it is having outer serous. So serous is formed by even peritoneum. मस्कुलर लेयर होता है. मस्कुलर के कितने 3 लेयर रहते हैं. हमने इससे पहले पढ़ा दिया था. इसे स्मूथ मसल फाइबर्स, नेमली व्हाट, इसमें स्मूथ मसल्स होती है. outer smooth muscle fiber, inner oblique, middle circular and outer longitudinal. And it is inner oblique is absent in your intestine. Oblique smooth muscles are absent in your intestine. Already we learned in your introduction. Then submucous layer is formed by the areolar tissue and blood vessels and lymph vessels. So this also you learned before only. Then you have an inner mucous membrane layer, which is also mucus secreting columnar epithelium. So the gastric glands they are situated in this layer. The inner surface of this mucus layer is covered by how much? 2 mm thick mucus. So it is having 2 mm of thick. If you want to revise this video, keep the video in the 2x speed so that you will save your time in your learning also. Next is, if you get a more speed also, it's okay. So glands of the stomach. So glands of the stomach are the gastric glands, right? They are known as gastric glands. They are the tubular structure. They are made up of different types of cells. These glands open in the stomach. They are called as gastric pits. So where these glands open, the glands open, the gastric glands they open in one region. Okay, that is known as gastric pit. Okay. Now classification of these glands. There is a gastric glands are of 3 types. First one is a fundy gland,
It is situated in the body. So it is fundic कहाँ है, body में है, fundic gland and fundus में है. तो नाम fundic gland है, मतलब body में भी रहते हैं इनके glands और location के basis पे है इनका classification, ठीक है. The fundic gland they are also called as main gastric gland or oxyntic gland. So fundic gland or oxyntic glands are the major functional glands. Okay. Next is what pyloric gland. Pyloric region में रहने वाले को क्या बोलते हैं, pyloric gland, right? Next is what cardiac gland. They are located in the cardiac region of your stomach. Okay, so oxyntic gland is also main gastric gland or pyloric gland, right? The structures of the gastric gland, what is that? The fundic gland, they are considered as a typically gastric glands. So these glands are located and they are tubular gland. Each gland they has a 3 parts. Okay, they have a body, neck and isthmus. Yes, they have a chief cells that is present in the fundic glands. They are the chief cells, that is a pepsinogen cells, parietal cells or oxyntic cells. They have a mucus nectar cells. Even it have a enterochromatin cells, enterochromophilin like cells. ये सभी cells आपके fundic cells में होते हैं, ठीक है. oxyntic cells है, parietal cells है, fundus region में chief cells है जो कि पेप्सिनोजन पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को छोड़ेगा. oxyntic cells जो parietal cells जो आपके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीजिंग के लिए हेल्पफुल है. म्यूकस नेक सेल्स जो म्यूकस सेक्रेशन के लिए हेल्पफुल है. इवन एंटेरोक्रोमैफिन cells and enterochromatin like cells. So these cells are also secreted. Now let us see here the secretion of this. Let us see here the parietal cells. Parietal cells are what are parietal cells are there? No, they are different from the other cell gland because the presence of canaliculi, they are similar. Okay, canaliculus. The parietal cells empty the secretion into the lumen of the gland. ये देखिए आप स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा गैस्ट्रिक ग्लैंड है बेटा, ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक पिट है. ये आपका म्यूकस नेक सेल्स है, ये आपका चीफ सेल्स है. ओके, पैराइटल सेल्स है, ये लूमेन है, राइट. So let us see this table. Chief cells. Chief cells, they are the secretory. Okay. Right. So chief cells, they are pepsinogen, renin, lipase, gelatinase, ureases. So chief cell is secretion. So chief cells are secreting रेनिन जो कि बच्चे का डाइजेशन के लिए है, लाइपेज, जेलाटिनेस एंड यूरिएसेस. पैराइटल सेल्स क्या क्या सेक्रेट करेगा, आपने बोला ना, पैराइटल और ऑक्सीटिक सेल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैल्शियम, दैट इज B12 डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, पैराइटल सेल्स. देन इट इज आल्सो सेक्रेटिंग द म्यूकस नेक सेल्स, म्यूसिन. इट इज जी सेल जो कि गैस्ट्रिन सेक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस. एंडोक्रोमैटिन सेल्स क्या है, सेरोटोनिन. अभी सेरोटोनिन क्या है, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है. ओके, हिस्टामिन भी अपना वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है. तो ये दो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर, वासो डायलेटर्स या वासो एंटीकोएगुलेंट्स नहीं रिलीज होगा. ओके, तो ये आपने यहाँ पढ़ा. तो these through the canaliculi, whereas other cells empty the secretion directly into the lumen. तो देखो यहाँ आपने देखा कि चीफ सेल है, पेप्सिनोजन सेल है, म्यूकस नेक सेल्स, एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स एंड एंट्रोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, they are releasing their secretion directly into lumen. So you can see here there is a lumen, orange color students, this image, right? So that is what. But when you go to the parietal cells, they are not having that. Let us go to the pyloric gland. The pyloric glands, they are very short and they are tortuous in the nature. The cells that form a pyloric gland, they are the G cells, mucus cells, EC cells and ECL cells. So these cells, it is very pyloric gland.
ओके। जी सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड, म्यूकस, म्यूकस को भी रिलीज करेगा पाइलोरिक ग्लैंड और कार्डियक ग्लैंड। हमने क्या किया, फंडिंग ग्लैंड्स हो गया तो पाइलोरिक किया, पाइलोरिक जो कि छोटे ग्लैंड्स है पाइलोरिक रीजन के, वो जी सेल्स है, म्यूकस सेल्स है, ईसी सेल्स है, मतलब एंडोक्रोमैटिन सेल्स और एंडोक्रोमैटिन लाइक सेल्स, ईसीएल मतलब, ठीक है। ओके, कार्डियक सेल्स also, it is also short and tortuous and it is giving mucus cells. It is having many mucus. Cardiac cells is having many, cardiac gland is having many mucus glands. It is having the ECL cells and these cells they are also present in the cardiac glands. चलो, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, अब ये थोड़ा अलग है टॉपिक। देखो, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स दे आर हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स ऑल्सो। कई बार अपने स्टमक में हार्मोन्स भी सेक्रेट हो जाते हैं गैस्ट्रो, ठीक है। दे आर partially they are present in stomach and intestine. Enteroendocrine cells, they are present in the gastric glands. They are, what are they? G cells, enterochromatin cells and enterochromatin-like cells. हमने देखा सेरोटोनिन को रिलीज कर रहा है, राइट। इसी तरीके से हार्मोन्स रिलीज करते हैं जी सेल को, गैस्ट्रिन हार्मोन को, राइट। जी सेल्स आर रिलीजिंग गैस्ट्रिन हार्मोन। Yes, let us go to the functions of stomach. What it is doing, it is a mechanical function. 5 mark question. Okay, mechanical function. So it is, first it is storage function. The food is stored in the stomach for a long period of 3 to 4 hours and it is emptied into the intestine slowly. The maximum capacity of the stomach is up to how much? 1.5 liter. I told you before only. The slow emptying of the stomach provides enough time for the proper digestion and absorption of a food in the small intestine. Right? Next, let us go with the formation of chyme. So it is also helping in the chyme formation. Chyme कैसा form होगा? पेरिस्टाल्सिस होगा, राइट। पेरिस्टाल्सिस होगा। आप bolus see, when bolus mixes with the gastric juice of a स्टमक में जब बोलस आएगा, जो आप स्वालो करोगे सलाइवा के साथ फूड मिक्स होकर बोलस फॉर्म करता, ठीक है। वो बोलस आके ईसोफेगस से पास होके आपके स्टमक में आता। स्टमक में आके ये बोलस जाके गैस्ट्रिक जूस जो कि आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके साथ मिलाया तो इट फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड मटेरियल। दैट सेमी सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड एज chyme। chyme का फॉर्मेशन भी हो रहा है स्टमक से। डाइजेशन फंक्शन, तो डाइजेशन फंक्शन रिफर्स टू द गैस्ट्रिक जूसेस। तो कौन से डाइजेशन जूसेस सीधे दे रहा है, देखो गैस्ट्रिक जूसेस it is releasing, you see gastric juice is having water and solid, सेम सलाइवा की तरह वाटर 99.5 और सॉलिड से 0.5। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखो आप, गैस्ट्रिक जूस, एक गैस्ट्रिक जूस में हम लोग देख रहे हैं इट इज रिलीजिंग पेप्सिन, रेनिन इन स्मॉल किड्स एंड एनिमल्स, गैस्ट्रिक लाइपेज, जेलाटिनस एंड यूरेस, ओके। एंड इट इज ऑल्सो रिलीजिंग सम म्यूकस एंड इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि आपके विटामिन B12 के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके ऑक्सीडिक सेल्स रिलीज करते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हाट इट इज रिलीजिंग अलॉन्ग विद वाटर, सॉलिड, सो मच इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इट इज रिलीजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और इनऑर्गेनिक में भी इतने इंपॉर्टेंट चीज़ों को न दे रहा है। तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम, कैल्शियम, potassium, bicarbonate, chloride, phosphate and sulfate. Concentration of hydrochloric is how much? It is 150 equivalent meters of liter. So next is it is also helping for the protection के लिए हेल्प कर रहा है। यस, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत एसिडिक होगा तो प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होगा, राइट। एंड ऑल्सो ऑल दैट फंक्शन, हेमोक्रियाटिक मतलब ब्लड फॉर्मेशन, hemochlorosis and excretion also. What is the properties and composition of the gastric juices? So gastric juice is a mixture of the secretions from the different gastric glands. So first you see the volume, it is 1200 to 1500 ml per day. What is its reactions when the gastric juice is highly acidic? Okay, and its pH is 0.9 to 1.2. pH is 0.9 to 1.2 due to the hydrochloric acid. The specific gravity is 1.002 to the 004. Right? Yes.
Next you are having the composition of the gastric juice. Gastric juice की composition में 99.5% पानी रहेगा, 0.5% solids रहेगा, right? 99.5% water रहेगा, 0.5% solids रहेगा. The solids are organic and inorganic. Okay, right. The functions of the gastric juices. The digestive function. The gastric juices, they act mainly on the proteins. Yes, they are the proteolytic enzymes of the gastric juice. They include the pepsin and renin. The gastric juice also contains some enzymes called gastric lipase, gelatinase, urease, and gastric amylase. Gastric lipase, gelatinase, urease, and gastric amylase. Yes, gastric lipase, gelatinase, urease, and also the gastric amylase. ठीक है, ये पूरे इन्हें रिलीज कर रहा है डाइजेस्टिव फंक्शन. तो पेप्सिन, अब पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन इज सेक्रेटेड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजन. ठीक है, इनएक्टिव पेप्सिनोजन secreted as inactive pepsinogen. ये पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आपने 12th में पढ़ा होगा, राइट? एंड ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैराइटल सेल्स, ये ऑक्सीटिक सेल्स. The optimum pH of the pepsinogen is also 6. What is this the pepsin is doing? It is pepsin converts the proteins into proteoses, peptones, okay, and it also curdling of a milk. Pepsin also helps in the curdling of digestion of milk, that is called casein. केसिन जो कि आपका रेनिन सेक्शन होता है करके आपको 12th में पढ़ाया गया, राइट? सो वो आप टेक्स्ट बुक से कंपेयर करेंगे, राइट? Right, let us go to gastric lipase. Gastric lipase, it is a weak lipolytic enzyme. So lipid के digestion के लिए lipid so major, so acidic medium and its pH is 4.5. So and it inactivates the pH and fails to below the 2.5. Falls below. The gastric lipase act on the pituitary butter fat, hydrolyzes into the fatty acids and also the glycerol. Right? Next actions of the other enzymes. You have a gelatinase. Gelatinases, they degrade the gelatin and collagen into the peptides. So they will degrade the gelatin and collagen into the peptides के नीचे convert करेगा. ठीक है. यूरेस मतलब यूरिया, दे एक्ट ऑन यूरिया एंड यूरिया जाके अमोनिया की तरह ये रिलीज करेगा. नेक्स्ट गैस्ट्रिक अमाइलेज भी रहेगा जो कि आपके अदर एग्जाम्स है ना आपके डाइजेशन के लिए. ठीक है, इट गैस्ट्रिक अमाइलेज भी स्टार्च पे एक्ट करेगा बट एक्शन इज इनसिग्निफिकेंट क्योंकि ऑलरेडी स्टार्च डाइजेशन हम लोगों सलाइवरी अमाइलेज में हो जाता है, राइट? रेनिन कर्डल्स मिल्क कर्डलिंग करेगा रेनिन. हेमोपियोटिक फंक्शन. सो हेमोपियोटिक फंक्शन इट इज intrinsic factor of K cells and secreted by the parietal cells. Okay, the important role. अब next सुना होगा intrinsic factor जो कि B12 के लिए important है. That is, it is releasing. Okay, it is also called as extrinsic factor also from which the GI tract is coming. So vitamin B12 it is important for the maturation factor during the erythropoiesis. Absence of this intrinsic factor of this gastric juice, it may also causes a deficiency of vitamin B12. Okay, and it may lead to the pernicious anemia also. ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी में ये पर्निशियस एनीमिया भी हो सकता है. नेक्स्ट इज व्हाट प्रोटेक्टिव फंक्शन of mucus. So mucus present in the gastric juice, they protect the gastric as mentioned below. So mucus also protect the stomach wall from the irritation of the mechanical injury by the virtue of its high viscosity. Right? It prevents the digestion action of the pepsin on the gastric mucosa.
Next, it protects the gastric mucosa. It protects the gastric mucosa from the hydrochloric acid of the gastric mucosa beneath the alkaline nature and its acid combining power. Yes, okay. Function of the hydrochloric acid. Hydrochloric acid, it is present in the gastric juice. Okay, it is present in your gastric juice. It is activating your pepsinogen into pepsin. So first function, you know that, right? It kills up some bacteria. It is too much important MCQ also. Okay, kills some bacteria, food substance, and it's a bacteriolytic function it is doing. Even it provides an acid media which is necessary for the hormones. Yes. Next, secretion of the gastric juice. So it is having the secretion of the pepsinogen. Pepsinogen is synthesized from the amino acid in the ribosomes and it is attached to the endoplasm reticulum. So pepsinogen मतलब पेप्सिनोजन क्या है? प्रोटीन को डाइजेशन वाला ही है ना. ये कहाँ से सिंथेसाइज हो रहा है? मतलब अमाइनो एसिड इन द राइबोसोम से ही आ रहा है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहे हैं, जो कि अपने चीफ सेल्स है ना, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ से आ रहा है. The pepsinogen molecules are packed into the zymogen granules by the Golgi apparatus. When the zymogen granule is secreted by the stomach to form chief cells, the granule is dissolved in the pepsinogen and also releases the gastric juice. Okay, students, till here it's very clear to you, right? Let us go to the secretion of a hydrochloric acid. What is the hydrochloric acid secretion? It is an active process. So it is taking place in the present canaliculi of parietal cell. Canaliculi means the process coming of the cell. Okay, outermost process like dendrites in the gastric glands. The energy is derived from this is coming from the ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. जब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा तब से ही ये एनर्जी आएगा, तब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होने के चांसेस है. इन द पैराइटल द कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द मेटाबॉलिक स्टडी. इट मे आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड. Okay, next the carbon dioxide combines with the water to form a carbonic acid. In the presence of the carbonic anhydrous, this enzyme is present in the high concentration in the parietal cells. The carbonic acid is the most unstable compound and immediately it splits into the hydrogen ions and bicarbonate ions. तो ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है अनस्टेबल कंपाउंड है जो कि इसमें कन्वर्ट हो रहा है. अब ये मैकेनिज्म देखो, इससे आपको आइडिया आ जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी के साथ रिएक्ट इन द प्रेजेंस सोडियम क्लोराइड फॉर्म्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaHCO3. तो क्या होगा अपने सेल में, ये देखो आपके पैराइटल सेल्स ऑक्सीटिक सेल्स है, राइट. तो ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है in the presence of carbonic anhydrous which is forming H2CO3, which is what your bicarbonate. H2CO3 is splitting again in the HCO3 and H plus. Here what is happening, this positive H plus is there, no, this positive H plus along with and chlorine you are getting from extracellular fluid say you are getting the sodium chloride Na plus and Cl minus, NaHCO3 and HCO3. so this Cl minus is there, no, this Cl minus H plus and Cl minus, so they together they form this one, so HCl is formed. So regulation of this gastric secretion is regulated by the intestinal secretion studied by some of the experimental processes. Okay, पहला क्या है, मेथड्स ऑफ द स्टडी. आपके सिलेबस में जनरल पैवलस पाउच के बारे में उतना कुछ पूछा तो नहीं जा रहा है, ठीक है. ये पूरा शैम्स फीडिंग ये पूरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, मतलब क्योंकि डेंटल स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं पढ़ा जा रहा. सो Pavlov's pouch is a small part of the stomach that is not incompletely separated from the main portion of the small bag. This Pavlov pouch was designed by the Russians and Pavlov in the dog. Okay, dog. It is studied for the conditional reflex. The Pavlov with the anesthesia dog is divided into the larger part of this one. So क्या होगा, the muscular coat of the isthmus. The isthmus connects the two parts. The cut edges of this two. देखो आपका स्टमक है, स्टमक का इतना कटिंग मिलेगा वहाँ से बाहर है. तो डॉग खाना
डॉग तो खाना खाता ही रहेगा, पर वो खाना उसके पेट में नहीं जाता रहेगा, डायरेक्टली यहाँ एक होल डाला गया है, वहाँ से निकलता रहेगा. Okay, now supply of the parallel pulse here, the parasympathetic, all the same points. Okay, this time as and what is the use is used to demonstrate the different phases of. So इससे क्या होगा, different phases of gastric secretion of particular cephalic and vagus this one. So Farrell's AV pouch. Farrell AV pouch. The pouch is prepared by the removing the part of the stomach and the transplanting same as the pouch as the subcutaneous abdominal and this one. तो इससे क्या हुआ अगर तो study the role of hormones. ठीक है, Farrell AV pouch से क्या हुआ, रोल ऑफ हार्मोन की स्टडी हुई एंड गैस्ट्रिक ड्यूरिंग द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सेक्रेशंस. ठीक है, ये कैसा हो रहा है, ये पूरा इससे स्टडी होता है. नेक्स्ट इज शार्प फीडिंग. शार्प फीडिंग इज ऑल्सो नोन एज अ फॉल्स फीडिंग. इट इज ऑल्सो अनदर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर डिवाइड बाय द Pavlov's to demonstrate the regulation of this. A hole has been made in the neck of the anesthetized dog. इसने क्या किया, शाम ने डॉग का नेक में फूल डाला गया, राइट. The esophagus is transversely cut, the cartilage is drawn out of this through the neck, right. So when the dog eats the food, it comes through the cut end of the esophagus, but the dogs are well satisfied by the shams pericardium, so the fistula opens into the exterior of the gastric wall. Right. Advantages of this research to demonstrate the secretion of the gastric juices during the cephalic phase, in the same animal vagotomy, the feeding in the vagus nerve also provides the role of vagus nerve also during cephalic. तो ये दोनों इसमें important features है, right. Then what is the phases of the gastric secretion? Gastric secretion is secreted through the three different phases. Okay, what is that? Cephalic phase, gastric phase, intestinal phase. In the human being, the fourth phase is called as interdigestive phase. Okay, which exists. All the phases are regulated by the neural mechanism of the hormonal mechanism of the growth. First, we call as cephalic phase. So the cephalic phase is secretion of the gastric juice by the stimuli arising the head region, that is cephalus, and that is called a cephalic phase. It is regulated by the nervous system. During these phases, the gastric secretion after without the presence of the food, okay, in the stomach, the quantity of the juice is also less, and this one. So you know, unconditional reflex. अब unconditional क्या है, इनबाउंड रिफ्लेक्स है, आपको डाइजेशन फूड डायरेक्ट मुंह में दे जाएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक वो अपना काम करते ही जाएगा. Yes, right. Next, you are having what conditional reflex. Okay, students. So it is. So what is the stages of reflex action of food? Food is placed in your mouth. तो फूड क्या करेगा, टेस्ट बर्ड से मीट करेगा तो डायरेक्ट आपका सलेवा सेक्रेशन होगा. फिर सेंसरी पल्सेस आएंगे तो माउथ से वो एफरेंट नाउ से फाइबर जाएगा तो ग्लॉसोफैरिंजियल which is what a part of your parasympathetic to the facial amygdala of hypothalamus, from where this efferent impulses pass to the dorsal nucleus of the vagus and the vagal efferent nerve fibers of the stomach. Then what acetylcholine is also secreted in the vagal efferent nerve ending that stimulates the gastric gland into this secretion. This experimental proved the Pavlov pouch and also shams feeding. Next we have a conditioned reflex. What is a conditioned reflex? The conditioned reflex is a response acquired by the previous experience also. So suddenly कुछ experience करते हो, like sight, smell, उससे फूड और जल्दी जल्दी खाते हो, right? So impulse from the special sensory organs through the efferent fibers and the neural circuits. तो जल्दी जल्दी और भी ज़्यादा खाने का मन करता है. यदि खाने का स्मेल अच्छा हो, खाने का टेस्ट अच्छा हो तो ज़्यादा खाने का भी दिल करता है, राइट. थिंकिंग उससे तो वहाँ से आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन आता है आपको, right. From the cerebral cortex, the impulse of this one passes from the dorsal nucleus to the vagus
and they reach to the stomach. The vagal nerve ending, they secrete the acetylcholine, it secretes in the secretion. Okay. Now, आपको फेजेस के ऊपर जाने से पहले हम लोग थोड़ा डाइजेशन के फेजेस पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये एक इमेज एक बस है जो कि आपका पूरा टॉपिक रिवाइज होने के लिए, ठीक है। चलो, तो पहला है सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज में ओनली नर्वस कंट्रोल रहता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, साइट, स्मेल और हियरिंग ऑफ फूड, ये पूरा क्या होगा, कंडीशनल रिफ्लेक्स। ओके, कंडीशनल रिफ्लेक्स एंड अनकंडीशनल रिफ्लेक्स दोनों क्या करेंगे, मतलब अनकंडीशन मतलब टेस्ट ऑफ फूड, जब मुंह में डाल तो टेस्ट आता है तो डायरेक्टली आप डाल लेते जाते हो, राइट। तो ये दोनों से क्या होगा, ये अपना नर्व सप्लाई वैगस को देगा। वेगस नर्व कौन सा है, अपना क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व किसमें कंट्रोल है, पैरासिम्पैथेटिक डाइजेशन में कंट्रोल है, राइट। सो इट लीड्स टू स्टमक सेक्रेशन गैस्ट्रिक जूस। इससे क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस से, तो ये स्टेज को क्या होगा, सिफेलिक स्टेज। सिफेलिक क्यों बेटा, सिफेलिक मतलब हेड, ओके। सो सिफेलिक फेज, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज that is what, nervous and hormonal, right. So it is having nervous and hormonal. What happens, bolus is entering in your stomach. So gastric phase means inside your stomach, okay. So what happened, when bolus from esophagus it had entered in your stomach, now it should mix with the hydrochloric acid, right. So it is also giving its supply to the vagus nerve, that is a local nerves, that is a gastrin, and it also stimulates and it also leads the stomach to form a gastric juice, okay. Next is what, intestinal phase। intestinal phase में क्या होगा, intestinal phase में काइम आएगा इंटेस्टाइन में, जो कि आपका देखो फूड बोलर से stomach से mixed with hydrochloric acid, so that chyme is entering into the intestine, so it releases two hormones. First one is hormonal, so nervous and hormonal is gastric phase, right. Intestinal, where is cursor, men, okay, we got a cursor। intestinal में और यहाँ देख सकते हो काइम इन द इंटेस्टाइन, सो जो गैस्ट्रिन इट इज रिलीजिंग, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। और इनहिबिशन, सेक्रेटिंग्स, टोमेटो, ये सभी इसके स्टॉप के लिए हेल्प करेंगे, यस। नाउ सिफेलिक स्टेज, पावलोव्स पाउच से या बेल डॉग इफेक्ट से हम लोगों को इसका इम्पोर्टेंस ही मालूम होता है, कंडीशन रिफ्लेक्स का, सॉरी व्हाट वी कॉल दिस वन, सिफेलिक फेज, ओके, यस। नेक्स्ट वन इज द गैस्ट्रिक फेज। The secretion of a gastric juice when the food enters the stomach, that is called as a gastric phase, ठीक है। secretion of gastric juice, gastric in the stomach में मेन फूड एंटर हो रहा है, इसोफेगस छोड़ के एंटर हो रहा है स्टमक में, it regulates both nervous and hormonal। The gastric phase secreted by this phase is a pepsinogen and hydrochloric acid, right. And also we have a nervous mechanism through which you have a local and myenteric reflex and vagal reflex. You have a hormonal mechanism also, students, is that clear, right. Next, nervous system, see local myenteric reflex, local myenteric reflex is elevated stimulation of myenteric nerve plexus in the stomach wall. After they enter in the stomach, the food particles accumulate the local nerve plexus, okay. They're present in the wall of the stomach. The nerve fiber, these glands, they are releasing your acetylcholine, which is also stimulating your gastric gland to secrete a large quantity of the gastric juices, okay. Next is the vagal reflex. Vagal reflex is a reflex in which the efferent and efferent vagal fibers are involved. So what is happening, vagal मतलब vagal में efferent और efferent fibers involved होते हैं। The presence of the food in the stomach, it is stimulates some sensory efferent fiber through which it generates some sensory impulses. The sensory impulses are transmitted the brainstem via the vagus
vagus, the brainstem turns to send its effectant impulses from the motor efferent vagus back of the stomach and cause a gastric sepsis. Since both efferent and also efferent impulses they pass through the vagus, that is called a vagovagal reflex. ये भी अपना गैस्ट्रिक फेज का ही एक पार्ट है. हार्मोन मैकेनिज्म आपने सुना होगा, हार्मोनल कौन से हार्मोनल गैस्ट्रिक में आ रहा है ना, that is secreted by the G cells, right? G cells, they are present in what? Pyloric gland. It is a revise of the point. A small amount of the gastrin, it is released in the mucosa of the small intestine of the gastrin and a polypeptide containing what? G14, 17 and G34 amino acids. So gastrin is released in the food when the food enters into the stomach. The mechanism is involved in the release of the gastrin and may be what? Local nervous reflex or the vagovagal reflex. The nerve ending of this releases what? The neurotransmitter. The neurotransmitter is called as gastrin. Yes, the action of this what gastrin on the gastric secretion. The gastrin stimulates the secretion of the pepsinogen. So secretion of this pepsinogen also you can see here. You can see the hydrochloric acid by the gastric glands also. Okay. Even you will know its importance by these two experiments also, Farrell and AB Koch also, which is telling the importance of the gastrin secretion. Next, intestinal phase. Intestinal phase में क्या होगा? Gastric juice enters the chyme enters into the when chyme enters the intestine. The chyme enters the intestine. Initial gastric secretion increase. अब पहले क्या होगा? Gastric secretion initially gastric secretion increase होगा. Laterly that gastric secretion progresses from intestinal phase. Gastric secretion under both nervous system and hormonal control. Intestinal or the this phase is entering the intestine and separates the duodenal mucosa. Okay, and the stomach through the blood. Okay, initial stage. Next is the lateral stage. You have enterogastron reflex and GI reflex. Enterogastron reflex, it is a, what is this? Enterogastron reflex, it is a reflex which that inhibits the secretion and the movement of the stomach during the distension of the myotic nerve, that is orifices, and so it is mediated by that. So enterogastron, आपने देखो enterogastric nervous system orifices आपने पढ़ा ही होगा और myotic भी पढ़ा ही होगा इससे पहले phase में, right? So GI hormone, what is the GI hormone is doing? The presence of the chyme in the intestine, in the presence of the secretion of many GI hormones in the intestinal mucosa and other structure. All these hormones they inhibit the gastric secretion. Some of these hormones they also inhibit the gastric motility also. GI hormones they inhibit what they are secreted. So secretin, it is secreted by the presence of acid king in the intestine. Next is what? Cholecystokinin. Cholecystokinin also in the presence of the chyme containing the fatty amino acid. Next is gastric inhibitory peptide GIP, that is in the presence of the chyme containing the glucose. Vasoactinal peptide VIP, that is secreted in the presence of the acid chyme. Then peptide VYY, that is secreted in the presence of the fatty chyme intestine. In the addition to the hormone, that is pancreas also secrete the hormones. That hormone pancreas is secreting, that is somatostatin during the intestinal phase. It also inhibits the gastric secretion. The intestinal phase also, that importance is also Farrell and IV Koch, again same story. Interdigestive phase, the secretion of a small amount of gastric juice between the meals or during the fasting, that is called an interdigestive phase. Okay, this phase of a gastric secretion during this phase is mainly due to the hormone like gastrin. Okay, this phase of this demonstration of Farrell IV pouches. Now what is applied physiology? Gastritis, that is a gastric mucosa, that is called as gastritis. It can be acute or chronic. बीमारी से क्या आएगा? इन्फेक्शन भी होगा इसका, ठीक है. तो पेट का इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ड्यू टू दिस इट इज ड्यू टू बैक्टीरिया इन्फेक्टर
Helicobacter pylori, excess consumption of alcohol, excessive of long-term administrative non-steroid administrative inflammatory drugs की वजह से भी पेट में इन्फ्लेमेशन, पेट फुगा बोलते हैं ना, इन्फ्लेमेशन फुट गया करके. The trauma of an nasogenic autoimmune disease also it may cause. Okay, it may features of this water, abdominal upset on pain, पेट दर्द रहता है, nausea होता है, उल्टी आने का चांस रहता है, वॉमिट आने का केस रहता है, anorexia, loss of appetite, क्या बोलती नाक ठग गई करके बोलते हैं ना, पूरा दर्द की तरह पेट, एंड इंडाइजेशन, डिस्कम्फर्ट, फीलिंग फुलनेस और एपिगैस्ट्रेशन, कभी कुछ कम भी खाओ, belching, the process that relies swallowed air that can be accumulated in the stomach. Even इस केसेस में क्या होगा, गैस्ट्राइटिस, जब स्टमक में गैस्ट्राइटिस होगा तो एयर भी आप जो लेंगे वो आपके स्टमक में, और जब उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, बेल्चिंग. नेक्स्ट गैस्ट्रिक एट्रोपी. Students, gastric atrophy, what is that? It is a condition in which the muscles of the stomach they shrink and they become weak. Okay, due to the shrink of the gastric juice and due to which there is a deficiency of, तो क्या हुआ, क्या स्टमक के मसल्स से वीक पड़ गए तो एकदम आपके डेफिशिएंसी ऑफ गैस्ट्रिक जूस हो गया. तो गैस्ट्रिक एट्रोफी कॉजेस क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस एंड ऑटोइम्यून डिसीज, राइट. सो इससे क्या होगा, ये ऑटोइम्यून भी होगा और क्रॉनिक होगा, ये एक्यूट नहीं होगा गैस्ट्राइटिस. ओके, गैस्ट्रिक एट्रोफी. सो इससे क्या होगा, इट कॉजेस क्लोरोहाइड्रिया, दैट इज व्हाट, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट नहीं हो रहा तो एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, स्टमक छोटा पड़ रहा है. यस, एंड इट ऑल्सो लीड्स टू पर्निशियस एनीमिया, क्योंकि आप सही से न्यूट्रिशन नहीं लेते ना. और कई बार गैस्ट्रिक एट्रोफी से क्या होता है, गैस्ट्रिक कैंसर का कॉज भी बन जा सकता है. नेक्स्ट इज व्हाट, पेप्टिक अल्सर. अल्सर द मीन्स ऑफ व्हाट, एरोशन, राइट, एरोशन ऑफ द सरफेस. और ये क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और ये नेक्रोसिस, मतलब कैंसर टिश्यू की तरह फॉर्म होता है, राइट. पेप्टिक अल्सर मीन्स दैट अल्सर इन द वॉल ऑफ द स्टमक और डिओडिन. ये कई बार स्टमक में भी देखा गया है और डिओडिनम लेयर में भी देखा गया है पेप्टिक अल्सर. ओके, that is caused by the digestion action of the gastric juice. When peptic ulcer is found in the stomach, स्टमक में यदि दिख गया तो उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर. यदि वो डिओडिनम में दिख गया तो उसे बोलते हैं डिओडिनल अल्सर. इनके कॉजेस क्या है पेप्टिक अल्सर के, इंक्रीज इन द पेप्टिक एक्टिविटी. पेप्टाइड मतलब प्रोटीन का एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, पेप्सिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो पेप्सिन ज़्यादा एक्सेसिव में अमाउंट में रिलीज होने की वजह से होता है. हाइपर एसिडिटी ऑफ स्टमक, तो अल्सर बोलते हैं ज़्यादा पेट में एसिड भरने से, एसिड भर जाने से भी अल्सर फॉर्म होता है. रिड्यूस्ड अल्कैलिनिटी ऑफ डिओडिनल कंटेंट भी, डिक्रीज इन म्यूसिन कंटेंट ऑफ अ गैस्ट्रिक जूस, मतलब जो लुब्रिकेशन है वो कम हो रहा है. डिक्रीज इन, देखो म्यूसिन कम हुआ मतलब म्यूकस कम हुआ तो प्रोटेक्शन कम हुआ. स्टमक को म्यूकस प्रोटेक्ट करता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रिलीज ही होगा, पर म्यूकस का जब सेल्स डैमेज होंगे तो एकदम वो ऐसे डिग्रेड करेगा आपके स्टमक को. और कांस्टेंट फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस भी होगा. फूड, हाई स्पाइसी फूड खाते हैं ना कुछ लोग, उनको या स्मोकिंग करने वालों को भी ये पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस है. लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ एंटासिड्स दैट यू कैन सी such as what, aspirin, ibuprofen and naproxen. Even you have a chronic inflammation due to what, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori is also causing what, gastritis also, that is inflammation. Here also it is causing peptic ulcer also. Now what are the features? The most common they are the features of the severe burning होगा, burning epigastric region में होगा आपका. ओके, अल्सर वाइल ईटिंग, खाना खाने के बाद भी आपको अल्सर में पेन होगा. ओके, एंड दिस पेन इज ऑल्सो 1 to 2 hours आफ्टर द फूड इज इंटेक, ड्यूरिंग एंड ड्यूरिंग नाइट. तो ये अल्सर का सिम्टम है. तो पेशेंट बोलता है मैं रात को खाना खा के सोता हूँ पर रात के 2 घंटा मेरे को पेट में दर्द आता है. सो इट में अकम्पाइंड बाई इवन समटाइम्स दर्द के साथ क्या वो नोचिया होता है, वॉमिटिंग होता है, hemostasis, that is vomiting of blood. See, vomiting of blood is very dangerous.
ओके देन हार्ट बर्न कुछ खाओगे भी फिर भी डाइजेशन हो जैसा नहीं दिखता. एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया एंड लॉस ऑफ वेट. Right, students, in the next part we will be continuing with pancreas, then liver, right, and also small intestine, large intestine, movement of GIT. Okay, here we had completed some 3 chapters, but one of the important chapters, yes, ठीक है. So I am stopping this session, hoping that you had learned in the Sembulingam digestion chapter. The this part is very clear to you. We actually try to make more videos so that if you can save your time and see what we are taught here. Majority it will be there in all the textbooks like AKJ, Chatterjee, Gutten and Hall, Organon. If you study the even other textbooks like Vander's Human Physiology, if you study any publication, even any other lecturer also, they may include majority of these points. So some points maybe get vary. Okay, maybe they give some more additional points. That's all. So that additional points you'll see in your annual videos next notes, and we include MCQs from many textbooks also, and we frame the MCQs. We also give you some previous year MCQs and all that, which is from a dental pulse and all that. Let us stop this. Thank you.